Good morning, everybody. Meanwhile, Sonia ma'am is trying to connect with us. I would like to know what are the challenges you actually face in your classroom while teaching writing skills to your students. So I would request all of you to put your responses in the chat box. What what are the challenges? I'm repeating my question. What are the challenges you feel while teaching writing skills to your students? Okay, as I can read in the chat box, some of you have already shared. Uh, uh, right. Savita is saying vocabulary. Ruby is also mentioning the same vocabulary. Aruna, vocabulary, sentence making. Sunanda is sharing basics are not clear, ma'am. They even don't know about tenses, lack of words, vocabulary problem, basics of writing, lack of vocab, wrong spellings, limited vocabulary. So, majorly what I can see is uh, the lack of vocabulary we feel that our students face as a challenge in like taking up in writing. So, and also the actually kids are not familiar with English language as they don't listen to it, so they are unable to write as well. Okay, so there's a problem with language sentence structures that generally students feel, and like thank you everyone. Okay, so when it comes to writing about one issue that is vocabulary, we I already had a session with all of you on developing vocabulary. So I think that it is those ideas would help you in developing the vocabulary of your students. And along with that, we face challenges in language sentence structures, as you have shared. So sentence structures are like, is the slide visible? This is which slide? Yes, ma'am. Which slide is there? Can you let me Ma'am, know? now it's formal letters on the screen. Okay, got it. So these are the things which we share with our students. We need to teach them how to write complaint letter, inquiry letter, placing orders, and letter to editor. So these are the basic things which generally are used in our, like when we have in throughout our life we write these kind of letters. So it is very important that students learn how to manage with all writing these. So first, let's discuss about formal letters. Um, Sonia ma'am, are you there? I guess she has some network issues. Yes, ma'am. She is not here right And now. okay, so I would preferably use my PPT for this, but again, there is a problem. Okay, let's discuss about this only what we have in front of us.
So it is very important that we teach them how to find the errors. Like generally, we have to find out what are the common mistakes which every student is making. Is there anyone who is a ART member or TDC in this group? If there is someone, please unmute yourself and let me know. Is there anyone who is working as a TDC in your school or as a ART member? For this, we discussed a wonderful strategy as my favorite no. My favorite no is where we give a problem. Suppose we give them a writing letter and we try to find out what are the common mistakes our students are making, and then we discuss about that those common mistakes and let them understand how they can improvise on in that area, and let them understand what are the areas of how they can improve in that. So this is very important that students understand this, and the common like they where to put the date, where to put the address of sender's address. So this is the standardized pattern which is on your screen. You can take the screenshot also. This is the way the letter should be constructed, and we should share this format with our students also. And then there's an activity. We can use this for asking, like we can ask the questions with the students: who writes the letter, when was the letter written, whom the letter was written to, reason for writing that letter, and what is the problem. So these are the questions for which if they understand this sequence: who, when, whom, reason, what, how, and again suggestions. So they will be able to remember the steps, and they will never make any mistake in that. So if they remember this WWW sequence, who, when, whom, so we can encourage our students to remember this sequence, and it will help them work with this area. So then here's a sample of letter writing, and Can I take it over? yeah, Sonia ma'am, please, Hello? please आप start कर सकते हो Hello? ma'am. You can start. You're audible. Ela, can I take it now? Yes, ma'am. Please take it. Sonia ma'am, I think my voice is not reaching you, but you are audible, so you can start the session. Okay. We have come to letter writing, and I think you did most of it. We were trying to come up with a letter. This is you are the Dharwa, resident of Q7105, whatever you want to use, and the access road to your locality is in a poor condition. Write a letter of complaint to the municipal commissioner regarding the problem faced by the residents because of non-maintenance of this road. Now, how will you go about it? I think most of you know exactly. And on the top, you have to write your address. Is this right? Whatever is written? Q7108. Is it right? Hello? Can you hear me? The date on which you have written the letter has to come in between. There has to be a gap of a line. We all know all this, but we have to make it very clear to the students. Then the commissioner whom we have to write the letter to.
From where is he? He's from municipal corporation, and obviously Vaishali. And when we write a subject, it's good to underline it, like complaint regarding what? Regarding poor condition of road. Sonia ma'am, as we are running short, shall I move on to the next slide? Yes. Because I think that teachers are already aware of this format, and we should Yeah. discuss the next point. Yeah, that will be very nice. Thank you so much. While writing articles, we need creativity, good vocabulary, and good knowledge of a subject, and also a skill to organize these ideas well. If we do not have creativity, the articles would become very boring. And vocabulary is also very much required, as we know that without the vocabulary, the communication becomes very poor. Yes, we can go to the next. Ela, can we move to the next slide? Yes, ma'am. Yeah. We all know the format of the article. Basically, in the middle, we have to write the heading or the title, and by whom is it written, and then the body part comes. First paragraph is generally of introduction. It is good if you start with a slogan or a question or something different from the usual pattern, so that it catches the attention of the checker. Whosoever checks your format, your article, knows what he or she is um, like. It becomes very clear that that person knows something about it very well. So if you have a slogan or something different to start with, it's really very good. And the second and the third paragraph generally have the cause, effect, present state of affairs of that article, of the topic. And the fourth paragraph, it draws solutions and conclusions, and you can have whatever points you want to give, exactly that positive effect or the negative effect, how to improve on it, that is given in the last. Write the topic name in very bold letters and underline it. That really makes it very nice to the eyes, and the the checker who is checking it really likes it. A survey by Times of India showed that something like this, if you write in a article, it becomes very different, and it really attracts your attention, and so the you you tend to get more marks. Health of students can be increased by green vegetables, says Dr. Geeta Malhotra, food nutritionalist. All this is like they very catchy things, like and they are made bold, so the checker's eyes or always fall on them. And divide material into small parts. And first word of each paragraph can be very big. These are just tips you can give to the students, and if they use it, it becomes very nice to see the paragraph writing or article writing of students. And when they get into the practice, they do better in their papers also. But first of all, they should know how to form small sentences which are legible and are easily understood. Next, Ela, the next one. Ela, could I have the next one? Yeah. Main articles which we need our students to know about are gender equality. These are few topics which generally come in some form or the other in the papers. Travel and tourism, mobile phones, a modern utility or a health hazard,
need to educate the girl child. These days, girls are very prominent in the this thing lives. So everything is being done to improve their lifestyle. So what is done in education has to be told, and the children need to know about it. Terrorism, a threat to humanity. This is also a very hot topic these days. Need for afforestation, and obviously COVID, pandemic and response. So if we make our students aware of certain topics, they can, mold their answers to other topics also. Then we can use mind map in article writing. Basically, in first, what we do is we write the topic in between the blackboard, and then we ask them who's related to it, and how it is related, why we need to do this, what are the consequences, what will happen, what repercussions, whatever related to the article, and what is the purpose of the article, what purpose are we going to achieve by it. So if we have these points with us, then it is very easy for us to form a article for them. They can write the essay in a better way. Yes, next. Analytical paragraph. Writing analytical paragraph which has 5 marks. It should be of 100 to 120 words. Students have to attempt one out of the two given to them, and there are visual as well as verbal and textual inputs. Skills involved are analysis and evaluation. Uh, the marks are distributed in such a way that 3 marks are for content, 2 marks for expression, uh, 1 mark is for grammatical accuracy in expression, and appropriate words and spellings, 1 mark. So mark cohesion was via connecting ideas, logical progression, and coherence through relevance of ideas and style. So the paragraph has to be such that it should be very catchy, and should the content is having more marks, so the content should be really good. Next, please. Yeah. Given below is an infographic related to the cultural and leisure activities that boys and girls engage in. You can look at the pie charts and extract information to write an analytical essay in about 100 to 120 words. You have to interpret it, analyze it, and explain the information. Like they have given that what activities generally boys like and what activities girls like. And then you can, know exactly where uh, the students are doing similar activities and where the different activities are being taking place. We have a very good say example of this given below. Ma'am, could you please forward it? Yeah. See, the given data shows how the children are spending their time in cultural and leisure activities. The boys and the girls seem to have different interests at some levels. But one thing that can be seen prominently is both like listening to music in equal measures of 10% each. There is a bigger percentage of girls than boys which enjoys reading. Girls a big a big 21% as compared to 2% of boys. The physical activities and sports that girls and boys take up shows a lot of variety. At one place where 53% of girls' physical activity includes netball, gymnastics, and dancing, the 54% of boys take up soccer, basketball, and skateboarding. The boys take almost double of what girls take up in computer games.
Ma'am, We all can we know that. exempt reading this? Like, we Okay, have okay, so many slides already there. So okay, let's quickly wind it up. okay, okay. Uh, Then the ban on single-use plastic is impractical. The purpose of articles like bags and packaging is ultimately to make human life easier. Plastic articles do this well, so they shouldn't be banned. You have to write a paragraph to analyze the argument. Yes, you can forward it. We have diary entry, and in this there is a format. Top left, you have to write the date, day, and time. Tense most frequently used is simple past, present perfect, and future tense. And we have to write in first person. Aage. Can we move forward? There's a Ma'am, tips. Shall I move forward? no. Tips for diary entry. Begin the entry with a general sentence describing the day or something like that. Like it's already given here. Today in the body discuss. Today I had a frightful experience of an overcrowded market in these corona times. Now, it's a very general sort of a sentence. Then we have story writing, tips to be shared by students for writing a short story. Generally, we should use small sentences, use only one tense, preferably simple past tense is very good for the children. Uh, Title is a must, and a narrative can be first, second, or third, but it should be the same throughout the story. And we should encourage students to be creative and avoid too long or too short dialogues. Next, please. Story elements, we have character, we have um, desire, then we have motivation, then a conflict, and lastly, what change this brings about. Structure of a narrative put in order. First is orientation, then series of events, then complication, and lastly resolution. I'll give this PPT to you all. You can read it and you can understand. I think it's quite easy what is given here. There's a sample of story writing. This also you can read and see how it has been put up. Thank you so much. Next. Ila, next. Yeah. The process approach to writing emphasizes the steps a writer goes through when creating a well-written text. The stages are like brainstorming, writing down many ideas that may come to an individual's mind or through discussions, pair work, group work. After that, you have to do the outlining. That is organizing your ideas into a logical sequence. The next step is drafting, Sorry. and then revising on it. Also, proofreading is done. And lastly, when everything has been done, then a final draft of it is written down. The process approach to writing is pre-write, then evidence, then organize it, then draft it, then again revise it, proofread it, and then final thing comes up. Writing as a product and process, generally what happens is it becomes a product when we assume that writers produce text in one sitting without any help, without any feedback from others. We just write it and then in the end produce it. But in the process part, that we generally do is assume that the meaning of the writing is created and evolves, and generally we share it and we take feedback from others, and then do the writing and revising. And later when we have already done all this, then a model empowers writers by encouraging them to understand and refine their writing strategies and techniques.
It's a lot of a process. It's, it's not done by only one person. It's done in a group, and there is a lot of learning in between. Next. Next slide, please. Yeah. Ending with a quote of thanks. Thank you so much for bearing up with me. I'm really sorry for all the trouble. Thanks a lot. Ila ma'am, thank you so much. I've really troubled you a hell of a lot. Not at all, not at all, ma'am. Rather, these glitches happen when we use these technological, when we are working with these things. So some glitches happen. It's all right. So there are some more slides if you want to discuss. Otherwise, if Chanchal ma'am, shall we close this session and give them a break of 5 minutes? Ma'am, actually, we are already running short of time, so I think we should skip the break right now. And if possible, you just start with the session so that we can give them break of 30 I'll give the slides to the teachers and they can read it. I think it's quite clear whatever is written there. They'll understand better. Yes, ma'am. You just Yes, Sonia ma'am, they will get a format, standardized format, which they can work with their students. Yes. Chanchal ma'am, I would request 5 minutes break. We will start at 10:25 sharp, and I'll close it with well in time because we fine. have a longer break at the next in the after this second session. So there I'll take 5 minutes from them. Okay, then that's fine. So Thank you we'll so see much, you ma'am. after Thank 5 you. minutes. Thank you, Sonia ma'am. And Thank you. thank you all the participants. Thank you, Ila ma'am. And see you after 5 minutes. It's just a short break of 5 minutes.
Okay, good morning, everybody. So it's 10:25, and now we are starting the session. And in this session, we are going to talk about ICT for English language teaching. Shall I start the session? If all of you are here. Yes, ma'am. You can start the session, and now I formally welcome you, Ila ma'am. Thank you so much, ma'am. Use of ICT for English language teaching. So, uh, ma'am, you can start the session. Over to you, Ila ma'am. Thank you so much, ma'am. So, teachers, what do you because ICT is not something unfamiliar to us now. It's every one of us are aware of various tools and various ideas about ICT. We have a fair idea of what ICT is all about. So I just wanted to know what you know about ICT. What do you think ICT is? So kindly write in the chat box. What do you understand with ICT? I am waiting for your responses. What do you think what ICT is? Most of us are using some tools, we are using some techniques, we are using some hardware, software, so many things. What is your idea of ICT? You can unmute yourself if you are not feeling like it's difficult if you for you to write. The IC Yes, Sunita, please. Your your voice is breaking. I don't know. Ruby, you want to share something? Your voice is breaking too much. I did not get anything. Okay, let's move forward because I think there is some issue with audios. So, what ICT is, so many researches are done in this, and SER has given definition of ICT. It is used as a generic term which refers to technologies which are being used for collecting, storing, editing, and passing on information in various forms. So, basically, if we look at the components, what ICT stands for, if we break it, we get to know that ICT is information, computer, and technology. And all this, if we look at the definition once again, we will find these words are given here: technologies, information, and obviously through computer. So this is what ICT is. We are sharing a lot of information. Even right now, we are sharing information with you, and it's a wonderful initiative of SCRT to bringing us together even in this COVID times. So if we look at the word of ICT, so many things are there. This in this diagram, this picture, you will be seeing so many apps we are using for music, for video, for location. We use GPS, we use SMS, voice, networks, Twitter, blog, communities, collaboration, social commerce, live casting. Like it is right now, this session is already live, casting live to you. Question and answer sites, social bookmarks, pictures, reviews, ratings, and gaming. So a lot of things are there which if we look at the apps, even you won't be able to read the names of all the those tools which are written here. So, as this is a very short session and a lot of things are not, we are not able to discuss, we'll come to the actual use for teachers, because as an individual there may be various uses of ICT, but for teachers it is very important because
E-learning is like it's a kind of real-time learning, improves productivity in the class. It helps us in assessments, giving abstract concepts. We can show the videos where abstract concepts are very easily described, and some as you can read here, it works as a wonderful teaching aid and resource. And we have hands-on advanced technological tools, which some of them I have already discussed during the vocabulary session and listening session, and some I'll discuss with you today. I'll share you some with you some tools which are really useful in this online teaching uh, pattern. So let's see what ICT tools, let's try to classify how it works for a teacher. So if you see that ICT tools have been reported to yield positive results in ELT classrooms, there has been researches all around the world that ICT tools are very supportive, and a judicious use of ICT tools is like it boosts learning in terms of attitudes, autonomy, and authenticity for the students. And there is a classification which Urban and a group of researchers, linguistic researchers have done. So what they find, I will be discussing that only. So first, which as e-creation tools, which we or our students can use. These are the creation tools. By using these tools, we can be creative, it can be entertaining, and we can create, explore, and discover more about the world. So what are the example of these tools? These are like many of us probably using these some of these ideas, like web publishing, we presentation softwares, exercise creating tools. Like we create in the Google Forms, we create question quiz and question answers for our students. And these days podcasting is very popular, so audio files are shared with using podcasting. Camera, movie makers, audio makers, we all use these. And if you many of you must be using these tools for creating the sharing. Your student must be sharing with you their presentations on Sikkim, like they are supposed to create a project on AIL. So they must be using these video maker, audio makers. And the second one is e-communication tool. And e-communication tools, we can divide them in two categories. One is the software which allows us to real time interaction. You must have discussed about synchronous and asynchronous communications in the e-resources session. So like synchronous, let's just check it out. What is synchronous and what is asynchronous? If you can put in the chat box, or you can unmute yourself and share through voice also. Okay, so what is a telephonic conversation? If we just talk about, is it a synchronous or asynchronous communication? You can unmute yourself or write in the chat box. Okay, I think there is some. Am I audible? Can you all hear me? I can see some, like I'm not able to hear any one of you. I think I am actually in doubt whether you are there or not.
Sachin, Ritesh, Ritu, Rupali. Yeah, here, ma'am. Okay. So, what do you think what telephone conversation is? Is it a synchronous or asynchronous kind of communication? I think it is synchronous Okay, why? because it's a two-way communication. Yes, and real time. The very important aspect with synchronous communication is that it is a real time interaction. So the communication which we are having at present is asynchronous or asynchronous. Synchronous, ma'am. Synchronous because it is happening in the real time. Like I can hear your responses, you can listen to me. So we are able to communicate and respond to each other. These kind of sessions, these kind of voice conferencing or messaging or like instant message like we are using in the chat box right now. So these kind of communications are synchronous because they are happening in the real time, and the other ones are asynchronous, such as email, text messages over, like we share a message on cell phone and we are not getting the response. By the time we get the response, we are not aware whether a message is communicated or not. So these are the e-communication tools, and we will discuss about them more in the next slides. So let's move to the next tool, which is like reading and writing tools, because we as a teacher, language teachers particularly, use ICT for developing all the four skills, and the fifth this skill which we discussed in the previous slide, that communication. So these are the five things which we are supposed to develop with our students, and for which we uh, need some tools, because this is the COVID time, and the way world is growing and like becoming a global village, it is very important to include these tools in teaching pedagogies. So for reading and writing tools, some ICT tools are there which help us in supporting our students, facilitating them, which prepare them for better writing and reading skills. And these can be like online boards, whiteboard, Jamboard, Google Jamboard, you must have heard of. Then online journals are there, blogs, wikis, ebooks are there. And these can be used to create digital material and portfolios, which learners can work collaboratively in this, and for we can help them develop their the student in like becoming a pro in writing skills and reading skills by using these tools. Then there are listening and speaking tools. These listening and speaking tools are can be video and audio files which we use from like YouTube, and many other such portals are there. Then there are podcast and vodcast. Have you heard of podcast? What is a podcast? Can any one of you please unmute yourself and share what a podcast is? I know theory is a little boring. We'll move to the practical side of this also. But before moving to that, we need to understand where ICT is helpful for us and how it can support us with the practical aspects. So a little theory is very important. So can you share what a podcast is? I Anyone of you I aware of have heard podcast, of podcast? podcast. I've Ma'am, heard of podcast, ma'am, but I'm not so sure what is it. I've heard it on in this radio thing. Okay, right. Anyone else? Samriddhi has shared her viewpoint. Manojji, would you like to share something? Sachin, Richa, Reena, Renuka, Ritesh, Ruby, I think Rupali. podcast is an application.
Yes, it's an application. It's the audio tool. Okay. So, as I can understand that there needs to have a clarity on what podcast is. Okay. So podcast is a kind of audio. You listen songs on Savan app, Ghana.com, and where radios and many other apps, hardwares we use to listen to music. So podcast is kind of a script, a small script, which is available in the audio format. And this audio format, when we play, students can listen to that, and we can give them a comprehension based on that. This as a teacher, I'm sharing this as a teacher. Otherwise, to upgrade our knowledge, we can listen to podcasts. There are n number of podcasts available. If you search Google, that are on every topic, almost every topic, there is a podcast available. These are very short audio clips, around 2 to 3 minutes or 5 minutes, maximum 10 minutes, which covers a particular topic in audio format. We can listen to that just like an ebook, but ebook is a bigger format. Like ebook takes up around 1 hour, half hour to 1 hour, but podcast are very small audio clips. And podcast is where a video is also associated with audio. So these are the things which are available these days for developing listening and speaking. Many of you were sharing in the previous session that our students lack opportunity to listen to English as much as they should to develop a fluency level. So this is a wonderful tool if you introduce your students to podcast, which is available on British Council app, and various other apps are available on which these audio clips are can be accessed, and students can listen to them in order to develop their listening skills. And then there are some audio video apps like YouTube, Flipgrid, and Edpuzzle. I will discuss about them more further. YouTube, you all of are very much aware of what YouTube is, and how Flipgrid and Edpuzzle help us. We will also discuss about it in the next slide. Right. So what we use ICT as is this is a very important aspect these days is assessment. We are supposed to assess the speaking and listening abilities of our students, and there is a weightage of around 5 marks in junior classes, and in senior classes there is more weightage given to speaking and listening skills, and for which we need to assess our students, how they perform, their portfolios, their projects. So these are the various areas where we assess our students. And in when you want them to assess their speaking skills and listening skills, this do two tools I discussed in the previous slide. One is as you can see is Ad puzzle is a kind of audio video uh, framework where a video is played. You can put questions in between, and students will be answering about that. Like a content is played for 1 minute, then there is a question, as we generally do in the classroom. After teaching something, we ask questions. Similarly, we can use it through Edpuzzle, and once the student answer that question, only then he will be able to see the next part of the video. So if the answer is wrong, then student have to re play the video, that clip, and again see that to answer the questions. And then Flipgrid is where students can create very interactive and playful videos in which you can check their speaking skills. So Edpuzzle can be very useful for assessing listening skills, and Flipgrid is very useful tool for assessing their speaking skills.
Now let's move to the next aspect, next classification, that is virtual learning environment. Virtual learning environment like we are using at present, this Cisco WebEx, Zoom, Google Meet, these are the web-based platforms. These platforms allows teachers and learners to manage and organize their work electronically, and parents and learners can access what they are doing, and there can be discussion forums, conferencings, and the best part is I don't know from which part of Delhi you are from, where I am sitting right now, but we are connected to each other. We are talking to each other. We are communicating, right? So this maybe your one of your student is sitting in his or her village, and now when you take online session, we are connected from their where whatever places they are sitting at that point of time. So these are the 6 classifications. If you quickly write down what we have discussed by now, what are the classification, it would be great. We discussed about 6 areas in which we can divide the ICT tools. So I would like to have your responses, what we have discussed by now, so that we can move to the practical area. And do it very quickly, please. I just want to ensure that it was not a lullaby and I didn't put you to sleep. So responses will make me, understand how much I am able to deliver to you. How ICT can be helpful for the teachers, in which areas we can divide them. Do it quickly. Why there's so much of silence? Ma'am, people are writing in the chat box. Okay. Okay, assessment tools. Okay, actually the chat box was not moving by itself. I have to check it, right? Thank you for letting me know. Reading and writing tools, right? To listen digital audio files, e-assessment tools, virtual learning environment, listening and speaking tools, synchronous, use of e-tools in connecting, listening, speaking tools. Okay, great. So let's move to the practical part of this discussion, and how some of the apps which can be very useful for you in developing the different skills. So you have already discussed about Padlet. Let me take you to Padlet first, because in this slide, as you can see, there are around 20 uses of Padlet which can be used for the teachers. Like students can present their posters, their resources, their video collection, their responses. They can it can become a collaborative note taking. Number 3 is very appealing to me, because their students can share their ideas. So which skill do you think Padlet will be supporting? Padlet you have discussed in the e-resources session, and what do you think, how it supports in developing, which skill it supports?
Are you aware of what Padlet is? Okay. If you want, I can show you that. Because we are. Please. I did not get you. Can you speak a little bit louder? Ma'am, you were saying no, I can show if you want to. I would like Okay. to see. Okay. So you want to see how Padlet works? Okay. Just give Yes, me a ma'am. minute. Okay. So this is how Padlet looks because I am already logged in. So here I can show you some of my already prepared Padlets. Uh, so it looks like this. You create a question. As you can see, what do you understand by happiness? And when a student double clicks, there is a dialog box opens up and students can share. As you can see, there is a camera in the end of this box, so they can insert a picture, they can share something from the web, they can share a link or upload something. Other than that, they can also write here. I can show you. Suppose I write happiness. For me, happiness is, it can be anything for them. So I Ila ma'am, your screen, not visible. ma'am, yes, ma'am, your PPTs are Oh, visible. okay. Your Padlet screen is not visible. Just you Okay. share your Padlet screen. Okay, okay, okay. Thank you, ma'am. I have to stop sharing my PPT to show you that because simultaneously two screens are not showing up. So, is this visible now? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Now it is visible. Okay. So this is how it looks. When we double click, a dialog box opens up and we can upload uh, something, audio, video. We can share a link, we can share a Google something search from there and put it right here. And then there is a camera, we can insert a immediately click picture, and there is an option to share all these things. So as you can see, there is a list of things which students can share, and they can share their views about whatever. I will. The question is, what do you think about happiness? Let me see. What do you understand by happiness? So they can write down the whatever title they want to give to their text. Like I have given in this. As you can see, there is another box where happiness and children is written. So they can write in here what happiness, your happiness for me is, and they can write whatever it is. It can be flowers, it can be parents, it can be something which they like. So they can share this kind of things, and by doing this they get the idea of other students also. If I don't want to take up so much of time in giving you tutorials. These tutorials are already available on Google. I have attached links in the resources slide where you can just click and go to that tutorial, and
learn how to use this tool. So I'm just making you familiar with the name of the tools and just a glance of it so that you have a fair idea of what are the ICT tools available which you can be useful for your students. So if we use this kind of tool, what it how it helps us, in which skill we can use this for developing. Through Padlet, which skill will can be developed in the students? You can share in the chat box, and I will show you some more. And you can be very creative with this. It can be very attractive. There are some ideas which are shared in this Padlet. Some of the activities which we did with other groups. The leading benefit of online learning. So many of them have shared, and you can also see this. Isn't it amazing? It happened many days ago, around 1 month ago. This Padlet was used, and the ideas shared by teachers is visible to you now. And students, when like we can help them develop their uh, yes, I got some responses in the chat box. Yes, reading and writing skills. Yes, Sony, thank you so much. This helps us in developing the reading and writing skills. And along with that, it will also encourage collaborative learning, because like in this online mode, we are students are not able to connect to each other that way as they used to do it during their classroom days, like when they were physically present in the classroom. So this helps them get to know the idea of other students, which is the advantage of normal classroom. So we can, although we cannot get that much of benefit, but this is equally helpful in that developing of reading and writing skills. Other than that, you would have used like let me move to the yes. So we can take use it as an exit ticket where teachers or students can share their feedbacks, and there are so many such things can be done with Padlet. Then you had some exposure with Mentimeter. Many of you, some of you are probably using it with the students also. Are you aware of what Mentimeter is all about? And what are the skills that can be developed with Mentimeter? Because in the e-resources session, Sunita Chauhan has discussed with you. I remember that. She shared with you Padlet and Mentimeter. Yes, vocabulary. So it is very useful. It can help you with developing word clouds, multiple choice questions. So it can be helpful in assessment also. If you have to check a little part of formative assessment kind of thing, so it helps you in that also. And it is again, if you want to see, I'll try to share what Mentimeter looks like. Otherwise, I can move it forward to Kahoot. Spell check. Yes, Tanvi. Thank you so much. So these are the things which help as an English teacher. We should be aware of some apps and some tools which can support in like dealing with and teaching our students. Especially as we discussed, we should have an app for reading, for one for writing, one for listening, and one for speaking. At least these four apps are very very important. We should choose as per our comfort and the comfort of our students, because for one thing we have various apps. Like if I talk about quiz,
like Kahoot. Many of you are aware of Kahoot, but there is quizzes, there is Quizlet, and all these apps work as a uh, assessment tool. It can be a teaching tool, but generally we use these tools as assessment. So we have to choose between the three. We cannot all the time use like we cannot experiment all the time. So we have to stick to one app at least, so that students become familiar with that. It is very difficult to teach a new interface, new portal every time. So we need to master 4 or 5 a kind of we can create a kitty, a bouquet kind of, in which we have 5 6 flowers of different categories, which can support the learning of our students. So Kahoot is a very powerful engagement tool in which we can ask questions, students can put their questions, and many such ideas are there. As I discussed with you, Adpuzzle. Adpuzzle is like a video goes on, and then there is a question. This is a tool used for listening activities, developing listening and speaking. And one more important tool which I wanted to discuss. I am sharing the names only because we don't have enough time to explore all the apps. You have to do it yourself, or otherwise there are so many NGOs and some organizations which are providing free trainings of these apps. You can connect to them and practice these tools. I also learned from there only. And then there is Wakelet, which is my favorite tool, and it works wonderfully with the there is 5 marks for portfolio, I guess, in our assessment thing. We have 5 marks for portfolios. So Wakelet is a tool where you can uh, get the online portfolios, for which you need not uh, don't need a space or cupboard or almirah where to record or keep those files of students. Everything will be available on the cloud, and you can access it any point of time. Even after many years, student will be able to see what they have done in their class 10 portfolios, or how the portfolio looked when they were in class 10th, and they can keep on adding. If you I would like to share this with you. Let me just give me a second if I can show you. Wait, wait. I created for myself a portfolio where I record what I am doing, how I am doing, and some of my friends are also using it, where they keep a track of their activities, and you can share the links of like, okay, I'm there. I just show you. Which screen is showing you now? Are you able to see the Wakelet page? No, ma'am, it's PPT. It's PPT. Okay. Yeah. Okay. Is this visible now? Yes, ma'am. Okay. So this is my page. I have created I created a collection as lockdown milestones. And this is my portfolio, what I did during this lockdown period. I give it a cover page, just like we give a cover to our files. So this is my cover page, and I posted my favorite quote on this. And as we move on, you will see what I did. I learned Wakelet.
I presented some paper somewhere, and these are the courses which I did during the lockdown period. So these are the certificates. What I did, I took a session on creative teaching with a group. So these are the collection of my work which I did during the lockdown. So this way, students can create their own portfolios. So which other sessions I took, what I did. So this is the kind of collection. As you can see, some Twitter tweets are there, Twitters. Some I posted some certificates. I posted some video. As you can see, this creative teaching in languages. There's a video available here, and whoever I share this link will be able to see this. So these are my badges which I earned from American English. And this way you can create your portfolio, and you can encourage your students to create a portfolio of their own, so that they can and I can have it, I can see this any point of time during whenever like I wish to visit what I was doing in which year. So that would be available, and I would like to show you some of my friends' work. So this page, because has just started, it is growing up. We have, I am showing you a portfolio of Mr. Chandan Jha, who is also a mentor teacher with us. So here his portfolio is, he has posted some pictures and his collections. A project-based learning collection is there, his lockdown milestones, and himself. So you can see there are 6 items, there are 10 items and 9 items. This can be these are the things which can be created for the students. They can, what they are doing, which classes they are attending, what they are creating, they can share here. So let's move back to the PPT and see some more tools. Okay. Then there is okay. When I was talking about vocabulary, I shared some board games with you, or some idea of board games, and I was attending some of the sessions where other teachers were also sharing with you. Some Priyanka Bora shared some board game with you, and rolling the dice was there. So there is a tool of for that you can use as online dice you can use. This is there are various type of dice you can find here. Let me just see if I can take you to that site also. Give me a moment, please. So this is something which will be very useful, and students would enjoy it, and you also would love to use these. Mm, So this is one app, one web portal, online stopwatch, by the name of online stopwatch, in which you will find so many very useful ideas, like this rolling the tool, online dice. We have various ideas. Is this visible? The screen is visible to you? Yes, ma'am. Okay. Okay. So we can. I'm showing you two examples, which can be very interesting. So I got 6, right? 4. So when you are playing the online board game, you can use this and
tell your students to keep a copy of board game handy, and they can like you can roll this dice and let them explore, let them move as per whatever number they gets in this. There are so many such apps available. uh, we can use this. Okay, I'm showing you 2 3 examples so that later you can explore as per your convenience. So this is something which students will enjoy a lot, and they'll have fun doing playing these kind of things. And similarly, in the generally in the online sessions, it becomes very difficult to create groups. In the classroom, it is very easy. So in there are group generators, and these are the group generators which look very attractive and work as a fun element. It will help students to connect with you emotionally, and they will feel like connecting to you, like this teacher works for us. They understand the effort of teachers, uh, and it is very simple to use. Here is a settings button. You just go to that, and let me just take out some names of students to show you how it creates the groups. But I just want you to be as creative as possible with your students, because that only keep their interest alive in the studies. Otherwise, this is the time when it is very difficult to keep students connected to us. One of my TDCs is promoted to some other school, and from there he shared with me that uh, one of the after his class, one of the students share in the student group that students please join his class online, because he teaches so well, and you would really love to attend his session and learning from him. So students also understand which teacher is working for them, and your efforts will make it happen. So I've just posted a list here of my class. I just want to create a group size of like I want to divide these students in 10 groups. Okay, and each group will have number of groups I have decided, so it will create the groups for me. Okay, so in one group we have these 4 names. As these 4 names. So this is group 3. It looks very attractive, and it's very captivating. So students will love to uh, have this kind of things, and when you divide them in groups, they would love to their interaction will become more interesting. They would take interest in, yes, today we'll be having a group activity. So that way you can create groups, and you can use it even when we return back to the normal mode of teaching. So you can use it in your tab or mobile to create groups of your students, and they would love it. So these are the things which can be very useful for us as teachers, as in the ICT is providing us so many things. There are so many timers also. At many a times we have extempore in the classroom or debate competitions. So for that we divide, we allot time, and we this these are the timers which help us in that. So here is a classroom timer. Let me just show you. Okay, so look like they look very appealing
to the students. So when a child is starts speaking, we can allocate timing to this, and like I set it for say 30 seconds. Okay, 3 seconds, and start. So it is very captivating for the students, and there is a wide variety of timers which can be used. I took 3 second time because we are we have to wind up this session, and so these are the things which are very very supportive for the teachers, and you can choose your own. I shared my favorite apps with you, my favorite ICT tools with you, and you can uh, use your own, search your own. There are some random name pickers also, like where in you want let me I just show you this also. So this is one of my favorite site where like these, here we put all the names, and let me just show you. So the name of the class will be written, will show like this, and you just, as you click on this, it will start moving. The moment you click, it will stop on one name. Okay, so now this child will speak. So you can keep create and save the name of the students and bookmark this page, so that whenever you have to take an online class with your students, so you don't need to create every time a fresh this name picker, and it will be readily available, and every time you just have to click and get the names. Now it is the turn of X to speak. Now Y will speak, so that way you can choose the names. So let's move back to the PPT. And here are some resources which I have given for you, which you can use. I'll add this. I've given all the links which you can just post, copy paste them, or just click on them to go to that where you can explore how to use these apps, and you can keep exploring, keep learning. This is the end of the session from my side, and you will have a 10 minutes break before the third session. So if you have any questions, I would readily answer them. I am here for 2 minutes more. If you have any questions, you can just unmute yourself and ask or put in the chat box. Okay, thank you, ma'am. And I Okay. hope it was a very nice session, and the practical aspect of it was really very nice. Even I enjoyed it a lot. And I request all the participants to just give a hand-on practice to all the apps that ma'am have discussed with you. Now it's a time for break, and it will be a short break of 10 minutes. And after that, we have a session on cyberbullying. So thank you very much. Thank you, Ila ma'am. Thank you all. Thank you, Chanchal ma'am. And I wish you all the best. Stay safe, stay healthy. Bye.
Hello, Chandni ma'am. Hello, ma'am. Ma'am, actually, it's a break time, and we'll start the session within 4 or 5 minutes. No problem, ma'am. So, welcome back, everyone. Now we have with us Miss Chandni Agarwal, and she is a cybersecurity coach, and she is a very experienced person in this field, and she will be taking a session on bullying and security. So, I welcome Chandni ma'am, and without wasting any time, I'll hand over the things to ma'am, and over to you, ma'am. You can start your session now. Thank you so much, ma'am. I have good morning, everyone. First of all, like we have some kind of boarding pass whenever we travel somewhere. So, in the same way, I have shared a link with you in a chat window. But I am starting with my brief introduction with the topic, and I'll share my screen first. 1 second. So, ma'am, is my screen visible? Yes, Chanchal ma'am, yeah, is my screen visible?
Yes, ma'am, your screen is visible. Okay. Am I audible enough? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. So welcome everyone, and we are talking about digital safety first in the cyber world. So we are talking about the agenda first. We will talk about safe digital footprints, cyber threats around us, self awareness and safety first, COVID 19 cyber attacks, fake news identification, cyberbullying and digital law, cyber hygiene, and how to report a cyber crime. This will be our agenda of today's meeting. So we all are in digital world living now. We are living more in digital world rather than in real world. So although we were using all these things in our daily life, net banking, searching something on Google, shopping online, movies, Facebook, Insta, WhatsApp, and now we have turned into the online classes. And this conference and this webinar is also one of the example of it. So classroom evolution, if we talk about till 2010, most of us were busy with our traditional classrooms. We are dealing with our normal routine classrooms. Till 2019, even we have started using ICT enabled traditional classrooms, but the classrooms were physical. But as we stepped into 2020, we have learned the new concept of remote classrooms, which is a kind of much more invitation to some good things, good opportunities, along with some disadvantages. So we will discuss both. So now, this is a small test. You can scan it. Scan this QR code. If you are not able to scan, I have posted a link in the chat window, link to security check. Please, all of you, click on the link. It's a small security check, and I am sharing your responses on the screen. So I think everyone is able to do this. So I am showing you my screen. I'm sharing my screen with you so that you can see your responses you are giving.
So this small security pass is already done with more than 400 people, and you can see the result. This is a general trend. Very rarely people they change the password, and they prefer free apps for teaching. And if we talk about the email ID, 61% of people they answered that personal they have used personal email ID for, and majority of them used free apps and software for downloading the things for their teaching. So if we talk about the search engine, 96% people used Google as a search engine, whereas 83% of them answered free apps and software for question number 2. 58% people say yes. Out of 58%, 83% of them answered the free software. Even 39% people, they are not checking the license of digital resources, and majority of them have used free apps and software. So this question is open for you. Till the meantime, I am coming back to my presentation. So what are digital footprints they say about us? So we have, we think that we are not leaving anything anywhere, but our digital footprints are like written as permanent marker. So you should be careful about what you share, where you share, and with whom you share. Be smart about the sites you are visiting, emails you are opening, and links you are clicking. So this we have to tell to our students, our children, our kids, our loved ones. So you have to be careful about these 3 things and be smart about these 3 things mentioned here. Now, if we talk about changing trends, this is the trend of January 2020. Now, if we talk about, this is somewhat in between 2020. And if we see the trend when the survey will come in the 2021, so this graph will be definitely going to be change in every 60 seconds. What is going on? So during lockdown period, the Netflix has a race, and most of the crime on hike was UPI frauds or Paytm frauds. The money fraud and the child pornography was on highest trend, and on the Netflix, the highest movie, or on the YouTube, highest material search is the porn content. But this is also a crime. So what are our probable risk? The probable risk is cyberbullying. So what is cyberbullying? This I will discuss in detail in the coming slides. But just for the introduction, when someone bullies us in the physical world, we get depressed, we get tensed. In the same thing happen when anything happens within virtual world. Suppose you are writing something, you are writing a poem, you are uploading your podcast, or you are giving something online and you are not getting likes. This may hurt you. So in the same way, physical word, virtual word also act like same. So cyber stalking is a kind of where person they stalk on web, and then crimes happen. So be always aware of certain things when you share or when you behave on it. Cyber predation is kind of blackmailing the person. The people they follow, they found that like you can say innocent people are trapped first in physical world. Same thing happens in the virtual world. So next attack after corona is a probable attack is cyber terrorism. Now no one needs any gun or anything for destroying a nation. Cyber attack is enough because everyone is online. So trolling is kind of a risk which students most of the time they feel. Even during this year, many trolls were made on their teachers, where teachers were struggling for the students for having good class and everything. They are struggling hard, but students are trolling the teachers.
data safety, identity theft, and these are some more probable risks. Cyber pornography is the one of the most dangerous risk, where children are like sharing their nude pictures or explicit content over net, and they are trapped. Fake identities and impersonation is also one of the threat. Email spamming, phishing is like showing like the authentic address, but it is not the authentic one. So you should take care of all these risks. Malware is attack of your computer by any kind of virus or spam attack. So let's start with that, how we can have a safe search. So we can uh, check authenticity with padlock. On every site you have a padlock. I am giving you a small demonstration of it, a quick demonstration, because in this session I want maximum you can have. So you can see here a lock. If you click here on the lock, you can see the certificate of the site which is provided by the certifying authority. So you can check the authentication of web using padlock. Then you can download images from Google, and what kind of images you can download. So let's have a safe downloading option. Suppose I want to download any images of say Taj Mahal. So when I am going to images, I am having all the images here. So you need to download Creative Commons license images. So you can go to usage right, and you select the Creative Commons licenses. So in this way you will only get the images which are under Creative Commons license. So these you just reference them, and then you can use it freely rather than using copyright images. And I will share a video link in the chat window. You can see that video, how we can find the free YouTube videos, and we can compress our YouTube search and have safe search on YouTube. Then we have one reverse image search method, that is images.google.com. If you write search by image, you go to images.google.com. Now, if you upload any image here, you can see the image source. Even you can paste any image URL, upload the image. Suppose I am uploading this image of a dog. It will identify that this is a dog image, and it will show all the images related to dogs. So in this way you can upload any image, and you can find out the authenticity of that image. On NDTV there is a program coming viral search. So you can authenticate the images shared on WhatsApp, how much truth is there in this image. So then we have search engines. Now I have asked one question, how many of you are using Google search engine? Although most of us are using Google search engine, but I suggest you use search engine wisely. Whenever you are you are using payment sites, try to use incognito mode. Go to these three dots at the right hand side, click and go to incognito mode. So this will also prevent your information to going out to third party. So in this way you can find out your information. This is one of the search engine which allows you to safe search. This is DuckDuckGo. DuckDuckGo gives you the option to search anonymously, so your details are not going out to the third party search engines. So next point of concern is email is your digital address and password is key to many logs. So now let's talk about the email address safety. See, this is one tool which tells that whether your email ID is compromised or not. See, I have given my email ID here and I am checking it. So it has two breaches with the educational website only, Canva and Edmodo. Like Zomato and so many other sites are doing the breaches. So if your email ID is compromised, it will
show that breaches are happened. See, I have given this email ID and this is breached by Dubsmash. And even in November 2020, this ID is hacked. Hacked in the sense it is sending our email address and password to the third parties like Edmodo and web host. So this ID is recently, when we are downloading any software, so I suggest you, when you are using free apps or you trying any other software, create a dummy ID. Like if I have, suppose I have created the ID just for downloading these apps and all. See, there is no pawn. So, although there is no pawnage found, but avoid the email IDs which are professional or which are used for your kind of net banking or some personal work. So, avoid using that. So, I am sharing this link on chat window so that you all can check your email ID for any compromise. Now, I know your next question will be that if you found your ID is breached, what to do? Just go to your email and unsubscribe from that particular app or that particular software. Like if you see which breach happened with you, just go and change the password frequently. So this is the only remedy which you can adopt. So you can check your email ID compromise here. Next is always have your strong password. Strong passwords are not, it's not easily possible by the hackers. Now companies they have made the rule. There should be minimum of 16 characters of password. So I am giving you a pause. Check your email ID for breaches in the chat window. Write down yes if you found any breach. In the chat window, say no if you don't found any breach. And you can read out these tips. You can use passphrases instead of passwords. Please have a silent read to it and check your email ID. Is there any pawnage found? Please. So most of us will see that anyhow, anytime we have got a spam mail. So how we are getting the spam mail on that ID? Because we have used it frequently to download the free things. See, nothing is free in this world. Nothing is free in this world. So you can try and give the message yes or no. If found any breach, say yes, otherwise no. So don't have a passphrase that you use frequently. Like if I say I love dosa and every time I speak, so the hackers, the first party hackers are known to you. So they and you people are very good. If no breach is found, you are safe. So try to use password, strong password, or use passphrase. So this is a little activity time. Quickly write down what all should not be posted online. Just write down which should not be posted. Not you have to write not to be posted online. If you see out of these what we can post online, just write down in the chat window. Very nice, hurtful comments. Even out of these, only you can post online. Rest other things we cannot post online. So, moving to the next part, we all are dealing with digital millennials. Even we are dealing with Generation Y. This is Generation Y, which is very smart.
and very practical, but at the same time they are disconnected from real world. So let's see benefits of social media. It gives us so many benefits. Even we have found our old friends, we can share the idea, and we are now, we don't, anyone don't, they don't have any scarcity of resources. We are full of, we have flood of resources, we have flood of conferences. So all this is just because of social media. But at the same time there are some risk, which is spending too much time online and being disconnected from the real world. There is a risk of being victim of online, which may damage your online reputation. If you are sharing your personal information online, you are inviting so many open threats. Also, you have risk of being harassed or annoyed by someone you don't want attention from. Even you can be a victim of online scam, and even if it is seen in some teenagers, they have reduced self-esteem. So now moving to the hot topic, cyberbullying. There are various forms of cyberbullying, which includes making fun of another user in chat room, harassing a user over internet, instant messaging session, even repeatedly calling to a person's cell phone is also a kind of cyberbullying. Posting derogatory messages on user social networking pages, circulating rumors about another on social networking sites, and unflattering pictures or giving some kind of sexting comments, unsoliciting or unwanted sending email is also comes under the cyber bullying. So we have to see that how what is a cyber bullying basically. Even giving comments in chat window to teachers comes in the cyber bullying. So children, they should know about that. Yes, this is also a part, also cyber. This is also comes under the cyberbullying, and we may have the punishment under the digital law. So these are two case studies given. A girl of class 9th was abused and threatened by a relative, and she was tortured, and even sometimes she drugged, and that relative used to send her abusive messages and threaten that he will tell her parents that she has a boyfriend. So that girl was scared and to confide in her parents. Because of the fear, the parents will not believe her. They would not believe her. So the lesson is we have to develop a kind of rapport that child should the child should communicate with teacher or any adult who trust. Even we should tell them you trust your parents and teachers first, so don't sit in silence. Similarly, a class 7 standard girl was blackmailed by an adult who kept on asking the girl for her nude pictures. This is very common nowadays. She explicitly refused every time that he asked and blocked the person, but that blackmailer hacked her ID and took revenge from her by morphing the photographs and posted them online. The girl was embarrassed, agitated, even thought of committing suicide. So, in this condition, we have to tell, be strong and face the situation. But it is very painful for the people who face such kind of crime and are victim of this. So recently I've got a case of a girl who is 30 years old, and her photographs from, and she's professional, she was sharing her photographs and phone number just for the professional link, but the hacker took the mobile number and sent her WhatsApp messages by morphing her face on nude pictures and nude videos. So there are so many applications available which are easily making up people nude, and deep nude. Deep face is a software which is making this kind of images. So how to deal with cyberbullying? So tell students, think before you post. The post, is it true? Is it hurtful, illegal? And is it necessary to post? Is it kind to post? So they have to think these pointers before posting. Also tell them to add people online when you know them offline. Remember, what you post online, it always remain there.
So avoid sharing your personal information on social media or other online platforms. Don't install unwanted software and apps like dating apps. So they are downloading these apps and they are, going into the trap. And even teenagers, they are very much involved in online gaming. And PUBG Blue Whale is a recent example of that type of games, which may lead to the suicidal attempts, and suicide cases are known, very known suicide cases we know about that, which were the outcome of these kind of online games. So if you feel upset after reading a post, don't immediately react, because like in physical world, people love to irritate the person who gets irritated. So take a break, and after that do something to distract, and then reply back on, take the action if needed, and block the person. So if these are the 4 steps: log off the site where bullying is happening, block the email or messages, and show it to an adult, save the message, tell someone you trust, and stop the hate. Always respect each other online and be the part of end cyberbullying campaign. So although I know we are running short of time, but you can write only one form of cyberbullying in the chat window. Very nice answer given by Sonal ma'am. And trolling, yes, Ritesh ji, trolling. This is also one part of cyberbullying. Yes, I am waiting for your responses. Sharing pornography, yes, it is offensible act. Even collection of pornography content is also a crime. Yes, Tarundeep ma'am has. I'm waiting for your responses in the chat window. Blackmailing by threatening to post private videos. Yes, nowadays WhatsApp blackmailing has started. Yes, stalking is also a crime. Yes. Samriddhi Tomar ma'am has written stalking. Stalking is separately. There is a thin line difference of cyber bullying and cyber stalking. Spreading false news comes under the fake news. So, but this is not a cyber bullying. That is not under the cyber bullying. So you have to know about what comes under the cyber bullying. Full comments comes under the cyberbullying. So we should know about the social media etiquettes, and be respectful on social media also, like you are respectful in the real world, because it's out is, the reach is on behavior. These are the golden rules. Treat others online the way you wish to be treated. Learn to say and accept no, and don't post anything that you would not like to last forever. So digital law, it can be defined as a legal rights and restrictions governing technology use. Most users are unaware of the possible consequences. Even they don't know that this is offensible act. Is this the, they don't know whether they are punished about this. So first one, if we discuss about plagiarism, you have imprisonment for a term. On the level of, so knowingly, unknowingly, don't share anyone's content, and always give the reference from where you are picking the content. Like I am sharing the content from, I have picked some content from the CBSE safety manual, which is there on the CBSE site. So impersonation is imprisonment up to 3 years and a fine.
Revenge porn has imprisonment of 7 years. Unauthorized access is from 2 to 3 years or fine with both. Defamation is imprisonment up to 2 to 3 years. So for cyberbullying, there is section 506, threat if harm to reputation to the child or to any person who is related to the child with intent to cause alarm to the child, harm to the child, and or cause the child to do any act which he is not bound to do, and imprisonment up to 2 years for or fine or both for this act of cyberbullying. If the child is girl child, then section 509 under IPC is applied. So let's talk about some COVID-19 common cyber attacks held during the year. Malware attack, email based attacks, message based attacks, fake mobile application and UPI frauds. So ISEA is one of the government initiative for security awareness. You can see I have acknowledged that logo here from where I have just got to the this one the information and the content I am sharing. So email and message based attack. So nowadays most of us have received messages or WhatsApp messages. So the people knowingly or unknowingly clicking the link and just got into the trap, because these kind of links may install spyware in your system and you can be one of the victim of all those attacks which are going online. So fake mobile apps like Arogya Setu is compulsory, fine. So, but there, how many A is there in the Arogya Setu? Quickly write in the chat window. How many A are there in the Arogya Setu app? Let's see how many of you know about the answer. Yes, 2. Very good. So some apps with single A was also there. So there, that were the fake mobile apps. So always check authenticity of mobile app if you find it suspicious. Yes, so window. So there are 2A. So if you remember, belief asked you in this way. And Paytm app uh, so A has been I mean they are selling, but their amount was deducted because B was a hacker. So always authenticate fake news. So this is some fake news identification checklist. You always check publisher's authenticity. Check the news publicity standards. One second. Is there any message? Someone is writing, they are having some problem. Is the voice audible? Chanchal ma'am, is the voice audible? Hello? Yes, Yes, ma'am. ma'am, Voice it is. audible. Okay, thank you. So for fake news identification, check publisher's authenticity, check the news publicity standards. Nowadays, there is again the digital law for fake news or spreading rumors. So verify domain number or the sender profile, intentions after the news intention,
So I have shown you the reverse image search method. If you are getting any kind of, you have recently seen this one Kisan Andolan, and they are showing who is this Bhabi. This was common in this one Shaheen Bagh. She was there. Now she is there in the Kisan Andolan. So they have done the reverse image method, and they found viral search after that rumor. So who is author? Notice the spelling and characters. If you see, there will be a spelling mistake in the mail or in the web address. So always try to type the sensitive links. Check whether this news is current or old. So I am telling you one very nice way to checking out the news, whether this is a current news or the old news. Suppose I am asking about the COVID-19 medicine, right? So now I want to see the news in or in the past 24-hour news. So this is the news of past 24 hours. So if you find any information, you can check whether this news is current or old. Always have a double check. Then only forward the message. Don't forward the message. Like nowadays, CBSE is sending messages on only on CBSE side on the directorate side. So check the authentic sites. Don't go for the messages flooding on WhatsApp groups. So check resolution of media. So when we are uploading our high resolution images, check the fake news resolution media is always a low resolution. When you download any app, the authentic app they have small size, but the fake apps have large size. Clickbait trick that I have shown you, so and so offer is there. Don't click on that link that attracts the large visitors. So these are some cyber hygiene tips. Self isolate your data. Don't share with unknown people. Monitor your account and passwords. Practice social distancing from unknown senders. Use protective equipment such as antivirus for your mobile and other devices. Avoid contact with suspicious mail or messages. Clean your computer and mobile devices so often. Now the point is how to report for the cybercrime. This is Childline 1098 and NCPCR. So always share this link to your students. These are the under the POCSO Act. They can connect with this. So Protection for Child Right Act, NCPCR guidelines are also available. And for if you or your loved ones or your family, or you want to guide everyone how to report for the cybercrime, the very first step is report on the social media where the crime happened. Report on the banking side where the crime happened. If it is a money fraud, if it is a social media fraud, immediately the first step is report on that particular social media site. Everything is very clearly visible there. Then report to cybercrime.gov.in and immediately report to your nearest police station to the cyber cell. So these are the quick steps. And this WhatsApp, this QR code, you can scan this QR code and download this cybersecurity guide. This I have published in interest of public awareness for cybersecurity. It is completely free and free from advertisements. Also, this is not a paid app. This is a free app, and here you can find one-stop solution to everything. I will not speak much about this. Only I'll tell this is available in 5 different languages, and it also has a playlist link where you will get all useful webinars and tips video related to cyber security, all useful PDFs issued by NCRT, NCPCR, CBSE. All links to download the PDF is also available.
quick guide how to complain for cyber. Complaint steps are given in all the languages even, and all helpline numbers are provided. Even mail ID of cyber experts is also provided on the app. So this you can download and have a quick solution, quick awareness guide, because what I think, the self-awareness is the first immediate uh, step to control your control from get victim out of any kind of cyber crime. So thank you so much for the patience listening. Here I am open for the questions. Is there any question you can ask? And if anyone wants to speak about the session, so I am sharing the links which I have in the chat window, which I have used during the session. Yes. Any question? Anyone? Yes, Chanchal ma'am, is there any question or any feedback of the session? Actually, ma'am, it was a very wonderful session, I can say. And even I came to know about various things, various ways I can protect my apps and email ID. And thanks a lot. It was a wonderful session. And even I can see in the chat box, the participants are responding that it's a wonderful session. Thanks a lot. Anybody who wants to ask anything? So I feel there are no questions. Ma'am, if possible, could you share these slides for our participants so that in case Yes, they have ma'am. missed some, yes, in Ma'am, case they, yes, ma'am, I will share this PDF with you. Yes, ma'am. The this all slides will be shared as the PDF with you, and you can share with the participants, no problem. And secondly, you can download this app and find out the useful information here. So what I have done, I have created a playlist and I am adding all the useful videos I found anywhere on the YouTube. I am adding to that the cybersecurity playlist. That is only, there is no single app available which provides you everything. I mean, you can download all the PDF, important resources for teachers. Even you can share it with your students also. All helpline numbers are available. So free helpline number is also there. And all these are authentic links, and so many experts and cyber police, they are connected with this app behind the scenes, because they cannot give their name in front of in front of app. I mean, in the front end they can't come, but all are associated at the back end. This is the one part. And even I got national award for cyber security awareness only, ma'am. okay, yes, that's good, ma'am. That's really nice. Okay, thank you, ma'am. Thanks a lot. Now it's the time for break, and we'll take a break for 5 minutes, and we'll join again. Thank you all. Okay. Okay. Thank you, participants. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Non-utilization में salt
So good afternoon, Sunil sir. And welcome back all the participants. Now we have Dr. Sunil Kumar with us, and he is a lecturer in Diet KKD. Now he will be taking a session on disaster management. Welcome, Sunil sir, and over to you, sir. You can start your session now. थैंक यू चंचल मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपको साथियों के साथ चर्चा करने के लिए आपने आमंत्रित किया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों नमस्कार। मैम ने जैसे परिचय दे ही दिया है, मैं डॉक्टर सुनील कुमार, लेक्चरर डाइट कड़कड़डूमा। तो आज हम जो चर्चा करेंगे वो डिजास्टर मैनेजमेंट को लेके करेंगे और चर्चा ही करेंगे, कोशिश करेंगे कि चर्चा जो है वो आपके हेल्दी पार्टिसिपेशन के साथ हो और हम सब परिचित ही हैं डिजास्टर क्या होता है और टाइम की जो सीमा है उसको भी हम ध्यान में रखेंगे। तो शुरू करते हैं मैम। डिजास्टर और उसका प्रबंधन, तो हम दो चीजें देखते हैं, एक आपदा है और एक उस आपदा का प्रबंधन है। तो आपदा को पहले हम कोशिश करते हैं कि आपदा क्या है, उस आपदा में जनरल हम किस किस चीजों को डिस्कस करते हैं, उसको कैसे क्लासिफाई करते हैं और फिर उसके मैनेजमेंट पे बात करेंगे। और फिर थोड़ा सा जो हम स्कूल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान या उसके तहत जो स्कूल डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी की जो हम स्थापना करते हैं या उसको का निर्माण करते हैं उस पर चर्चा करें। तो जैसे हम देख पा रहे हैं कि डिजास्टर क्या है। तो डिजास्टर जो है वो एक ऐसी घटना है जिसमें सामान्यतः जो है कोई भी अनप्रेडिक्टेबल घटना होती है, यानी कि कोई इसका समय नहीं होता है, कभी भी आकस्मिक आपकी घटना घट सकती है और इसमें आपको ज्यादा रिएक्ट करने का टाइम नहीं मिलता है, इंस्टेंटली होता है। इस पे आपका इफेक्टिव लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स जो है वो प्रभावित होते हैं। नॉर्मल लाइफ आपकी जो है डिस्टर्ब हो जाती है, लाइफ और प्रॉपर्टी का बहुत अधिक आपका लॉस होता है। फिर दोबारा आपको उसको एडमिनिस्ट्रेटिव करने के लिए लोगों को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है और पॉलिटिकल, साइकोलॉजिकल, आप देख रहे हैं इकोनॉमिकल जो भी है वो आपके डिस्टर्ब होता है और उन लोगों को दोबारा रिसीव करने के लिए ज्यादातर जो है वो समस्याएं होती है, उसमें आपकी धन जन की अपार हानि होती है, उसको हम डिजास्टर के रूप में देख पाते हैं। तो अभी हमने ये समझा कि डिजास्टर जो है कोई भी एक ऐसी आकस्मिक घटना है जिसमें आपका लार्ज लेवल पे आपको इकोनॉमिक और आपका लाइफ का नुकसान होता है, उसको हम डिजास्टर कहते हैं। नेक्स्ट है डिजास्टर को जब हम क्लासिफाई करते हैं तो डिजास्टर को हम दो पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं, एक नेचुरल डिजास्टर और सेकेंड आपका मैनमेड डिजास्टर। नेचुरल डिजास्टर को फर्दर हम तीन पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, मेट्रोलॉजिकल, टोपोग्राफिकल और एनवायरमेंटल डिजास्टर। जबकि मैन मेड डिजास्टर जो है वो आपका टेक्नोलॉजिकल डिजास्टर है, इंडस्ट्रियल डिजास्टर है और आपका वर्कर डिजास्टर। जो आपकी मेट्रोलॉजिकल डिजास्टर्स हैं उसकी कैटेगरी में हम फ्लड्स को रखते हैं, सुनामी रखते हैं, साइक्लोन है, हरिकेन्स हैं, टाइफून्स हैं, आपकी स्नो स्टॉर्म्स हैं, ब्लिजार्ड्स हैं और आपका हेल स्टॉर्म्स है। इसी प्रकार टोपोग्राफिक डिजास्टर्स में अर्थक्वेक हैं, वोल्केनोज हैं, लैंडस्लाइड्स हैं, अवालांच हैं। इसी प्रकार जो आपके एनवायरमेंटल डिजास्टर्स हैं उसमें आपका ग्लोबल वार्मिंग है, एलिनो इफेक्ट्स है, ओजोन है, ये सारा हमारा नेचुरल डिजास्टर है जिनको हमने फर्दर आपका क्लासिफाई किया। नॉर्मली हम देखते हैं तो जो हमने अभी दो क्लासिफिकेशन किए, एक आपका नेचुरल डिजास्टर और एक आपका मैनमेड डिजास्टर। हम इनके कॉजेज की बात करते हैं तो कई बार क्या देखते हैं, नेचुरल डिजास्टर भी होती है लेकिन उसके पीछे भी कुछ आपके ह्यूमन कारक जो है वो प्रभावी होते हैं। जो रिसेंटली हमने देखने को आया है कि नेचुरल डिजास्टर है लेकिन कहीं ना कहीं उनको हम उनके कॉजेज को कहीं ना कहीं हम फोर्स करते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज के द्वारा। बाकी तो हम स्पेशल आपका बिल्कुल लाइन नहीं खींच सकते हैं कि ये जो नेचुरल डिजास्टर है इसके पीछे टोटली कॉजेज जो है वो नेचुरली हैं, लेकिन ह्यूमन एक्टिविटीज कुछ अभी लास्ट 2 डिकेड्स में हमने देखा है, तो जो भी आपके ह्यूमन एक्टिविटीज हैं उनकी भी कारण भी जो नेचुरल डिजास्टर है उनकी फ्रीक्वेंसी में अंतर हुआ है। जब हम इनको मेजर करते हैं नेचुरल डिजास्टर्स को तो उसकी 6 इंडिकेटर्स हैं। एक आपका मैग्नीट्यूड्स है, मैग्नीट्यूड्स मीन्स आपका जो परिणाम यानी किस स्तर का आपका जो डिजास्टर है वो आपका
घटित हुआ है। दूसरा उसकी स्पीड, थर्ड आपका ड्यूरेशन, फोर्थ आपका फ्रीक्वेंसी, फिफ्थ आपका एरियल एक्सटेंशन एंड एरियल रियलेबिलिटी। मैग्नीट्यूड, जैसे हमने देखा कि मैग्नीट्यूड रेट एज द एक्सट्रीम हैप्पीनेस and pose sufficient threat of the human system to be the considered natural hazards. For example, जैसे यानी कि किसी भी हैजार्ड्स की हम तीव्रता नापने के लिए मैग्नीट्यूड या उसके परिमाण की जब बात करते हैं, जैसे हम अर्थक्वेक को रिक्टर स्केल पे नापते हैं फॉर एग्जांपल, ऐसे ही स्पीड ऑफ ऑनसेट है। स्पीड में मतलब कितनी जल्दी से वो जो आपकी घटना है वो घटित होती है, उसके रेफरेंस में इसको स्पीड ऑफ ऑनसेट क्या है। ड्यूरेशन, कितने समय तक वो घटना किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में बनी रहती है, उसका अवधि या ड्यूरेशन कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका एरियल एक्सटेंटेड, यानी कितने एरिया को वो इफेक्ट करती है। और फ्रीक्वेंसी, मतलब कितनी बार उसका जो रिटर्न पीरियड है वो कितने बार में आती है, कोई घटना किसी क्षेत्र में कितने समय बाद घटित होती है, वो आपकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। और इसी के आधार पर उस एरिया की जो है रियलेबिलिटी बनती है, यानी उसकी विश्वसनीयता बनती है कि कोई एरिया इन नेचुरल हैजार्ड्स के प्रति कितना विश्वसनीय है या उसकी विश्वसनीयता कितनी है। अगर किसी एरिया में आपकी इन नेचुरल डिजास्टर की फ्रीक्वेंसी बहुत अधिक है, जल्दी जल्दी आते हैं, तो उसकी रियलेबिलिटी उतनी ही कम होगी। डिजास्टर में आप, ये तो डिजास्टर की हमने बात की, डिजास्टर क्या है और डिजास्टर को हम किन किन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और उसको हम कैसे मेजर करते हैं। अब दूसरी बात है कि डिजास्टर का मैनेजमेंट क्यों जरूरी है। तो डिजास्टर के मैनेजमेंट में हम देखते हैं तो डिजास्टर का मैनेजमेंट जो है हम 3 स्तर पे करते हैं। एक होता है आपका प्री डिजास्टर मैनेजमेंट, एक होता है आपका ड्यूरिंग डिजास्टर मैनेजमेंट, और एक होता है हमारा आफ्टर डिजास्टर मैनेजमेंट। तो ड्यूरिंग डिजास्टर मैनेजमेंट हम क्या करते हैं, यानी आपदा से आने से पहले हमारी बहुत सारी प्रिकॉशंस होती है, क्योंकि हम देखते हैं कि भारत जो है हमारा, जितनी इसमें हमारी सोशल और कल्चरल डाइवर्सिटी है उतनी ही हम फिजिकल डाइवर्सिटी इसमें देखते हैं। और इसमें जितने भी आपके फिजिकल फीचर्स हैं, चाहे वो आपका माउंटेन रीजन्स हो, प्लेन हो, कोस्टल रीजन्स हो, हमें सभी देखने को मिलते हैं। तो जो जैसा रीजन है उसमें उसी प्रकार की हमारी जो है डिजास्टर्स घटित होती हैं। अगर हम कोस्टल रीजन्स में हैं तो हम सुनामी और साइक्लोन्स फेस करते हैं, और अगर हम बिल्कुल माउंटेन रीजन्स में हैं तो हम अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड्स जैसे प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। जबकि आपका जो प्लेन रीजन्स है उसमें भी हम फायर हो, चाहे आपकी सूखा हो, फ्लड हो, और अर्थक्वेक जैसी समस्याएं भी आपकी प्लेन रीजन्स में हमें देखने को मिलती है। तो क्षेत्र के अकॉर्डिंग भी हम इन आपदाओं को जब देखते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमें क्या होता है, अपना जो प्री डिजास्टर मैनेजमेंट है उसको हमें प्लान करने में मदद मिलती है। हम उसी अकॉर्डिंग उसको प्लान कर सकते हैं। दूसरी एक बात के रेफरेंस में बहुत एक अच्छी बात है कि हमारे यहाँ सीजन्स मिलते हैं। सीजन्स हैं तो सीजन्स के अकॉर्डिंग आपकी कुछ आपदाओं को हम रिलेट कर पाते हैं। एनी सीजन में हो सकता है फ्लड की एक आम बात है आ जाती है, और वो कब आपदा का रूप ले लेती है तो उसके लिए हमें पहले से प्रिकॉशंस होता है। ऐसे ही आप देखते हैं कि जब हम समर सीजन या हॉट सीजन में होते हैं तो फायर की बहुत सारी घटनाएं हमें देखने को मिलती हैं। तो उन सीजन्स के हिसाब से हम अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। और इसमें जो हमारे इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन है, जो गवर्नमेंट के पॉलिसीज है, वो बहुत इंपॉर्टेंट करती हैं, जो हमें पहले से आगाह करती रहती हैं, हमें कम्युनिकेट करती रहती हैं, और बहुत सारे प्रिकॉशंस के लिए हमें बताती रहती हैं। तो ये सारी जो हमारा प्लानिंग होती है ये बिफोर डिजास्टर होती है, जिसमें हम अपने क्षेत्र के अकॉर्डिंग अपनी जो भी डिजास्टर है उसको आइडेंटिफाई करके उसके अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हैं। दूसरा होता है ड्यूरिंग डिजास्टर। ड्यूरिंग डिजास्टर फिर हमें बहुत सारी एक्टिविटीज करनी होती है, क्योंकि ड्यूरिंग डिजास्टर जो मेन फोकस होता है वो आपका ज्यादातर जो भी इफेक्टिव लोग हैं उनको मदद पहुंचाने का होता है, कि कितने लोगों को हम बचा सकते हैं और उनको मदद पहुंच सकती है। तो उस प्रकार की जो भी एक्टिविटीज हम उस समय करते हैं वो हमारा ड्यूरिंग डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत आती है। आफ्टर डिजास्टर मैनेजमेंट में हम देखते हैं कि जो भी लोग हमारे इफेक्टिव हुए हैं उनको दोबारा से स्थापित करना जो है वो हमारा आफ्टर डिजास्टर मैनेजमेंट की श्रेणी में आता है। ये कुछ फिगर है जो हमें चिंतित करती है इन डिजास्टर्स के प्रति। मेजर डिजास्टर है सिंस 1948 से कहाँ कौन सी डिजास्टर है, उनसे कितना कितना हमें लॉसेज हुआ है। ये एक फिगर है, बस फिगर इसलिए है क्योंकि हमें पता रहे कि इन डिजास्टर से इस लेवल तक भी हमें
नुकसान हो सकता है, तो हम इनके लिए थोड़ा सा प्रिकॉशंस बरतें और समय से पहले इनकी थोड़ी सी तैयारी करें। जबकि हालांकि हमने पहले कहा है कि ये अचानक होती हैं, हमें रिएक्ट करने का टाइम नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी कुछ स्पेशल एरियाज में कुछ हमारी जो डिजास्टर्स हो आइडेंटिफाई थे, तो उनके अकॉर्डिंग हम अपना प्लान कर सकते हैं। जैसे हम देखते हैं कि हर जो भी आपका रेनी सीजन या आपका समर सीजन होता है, कोस्टल रीजन में आपके साइक्लोन आते ही हैं, किसी ना किसी नाम से आते हैं और वो बहुत ज्यादा आपके भयावह होते हैं, तो हम आगे देखेंगे। इसके बाद है आपका इम्पैक्ट ऑफ नेचुरल डिजास्टर, लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसमें एक डाटा दिया हुआ है आपका, जो हमारे अबाउट 95% जो केसेस होते हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज में होते हैं, और डेवलपिंग कंट्रीज में जो वहाँ होते हैं जहाँ आपकी 2/3 पॉपुलेशन निवास करती है। इन क्षेत्रों में ज्यादातर लॉसेज जो होता है वो थोड़ा सा इस तरह से होता है, क्योंकि यहाँ पे आपकी ज्यादा सोर्सेज हमारे पास नहीं होते हैं बचाने के लिए, और अगर होती भी है तो वो बहुत कॉस्टली होती है। ये एक कंपैरिजन चार्ट है आपका, जिसमें नेचुरल डिजास्टर और मैन मेड डिजास्टर का कंपैरिजन दिखाया गया है। मैन मेड डिजास्टर जो है वो उनमें ज्यादा वेरिएशन है, जबकि नेचुरल डिजास्टर जो है जो बहुत ज्यादा आपका देख पा रहे हैं बहुत ज्यादा वेरिएशन है। तो कब किस कैपेसिटी या किस आपका मैग्नीट्यूड की आपकी कोई घटना घटित हो जाती है उसका हमें पता भी नहीं होता, उससे हमें कितना नुकसान हो जाए उसका हम अंदाजा नहीं लगा सकते। इसीलिए नेचुरल डिजास्टर जो है इनमें वेरिएशन बहुत ज्यादा होता है। अर्थक्वेक देखते हैं तो जो आपका वेनेबिलिटी प्रोफाइल है इंडिया की, तो उसमें हम सभी क्षेत्र देख रहे हैं, ज्यादातर आपका इसमें माउंटेन रीजन्स भी हैं, आपका फिर ड्रॉट वाला भी है, फ्लड वाला भी है, और आपका कोस्टल रीजन्स भी हैं जहाँ आपका सुनामी आता है। तो आपका 57% लैंड जो है वो हमारा अर्थक्वेक से प्रभावित है, जिसमें से आपका जो 15% है वो आपका सीवियर अर्थक्वेक, 68% लैंड जो है वो आपका सूखा से प्रभावित है या सूखा से घटित है। इसी में 12% जो है वो हमारा फ्लड से रिलेटेड है, और अबाउट जो हम देखते हैं कि हमारी 7,500 किलोमीटर लॉन्ग कोस्टल लाइन है, तो उस क्षेत्र में हम साइक्लोन और सुनामी जैसी घटनाओं को भी फेस करते हैं। ये भी मेजर डिजास्टर ही है, इंडिया के रेफरेंस में थी। पिछला जो डाटा देखा था वो वर्ल्ड के रेफरेंस में था। तो कौन कौन से क्षेत्र में किस तरह की आपकी कौन कौन सी घटनाएं होती हैं और कब कब हुई हैं, उनसे कितना हमें नुकसान हुआ है। ये भी कुछ आपकी मेजर डिजास्टर इंडिया है लास्ट 40 इयर्स की। हम देख पा रहे हैं कि कब कब कौन से हैं, तो इनमें हम जब देखते हैं तो ड्रॉट है, आपका साइक्लोन है और अर्थक्वेक है। ये ही आपकी मेजर आपकी कुछ डिजास्टर्स हैं जो बार बार आपका रिपीट हुआ है। ये आपका मैनी डेंजरस नेचुरल डिजास्टर ऑफ इंडिया है। तो ये जो डिजास्टर का मैप है कि कहाँ कहाँ कितना आपका डिजास्टर्स आई है और कहाँ कहाँ सुनामी आई। तो ज्यादातर आप देख रहे होंगे जो कोस्टल रीजन हैं वहाँ हमारी सुनामी है, जो आपका ऊपर का जो हिल एरियाज है वहाँ पे आपका फ्लड और आपका अर्थक्वेक में देखने को मिलता है। अब अर्थक्वेक क्या है, तो हम सभी जानते हैं कि अर्थक्वेक क्या है। किसी भी आपका नेचुरल या आपका मैनमेड घटना भी हो सकती है, जैसे हम देखते हैं कि ओवर आपका माइनिंग के तहत भी हमारा कई बार अर्थक्वेक आ जाता है, या नेचुरल प्रोसेस तो ये है ही क्योंकि हमारी जो अर्थ है वो वेरियस प्लेट से बनी हुई है। जैसे ही प्लेट्स में मूवमेंट होता है तो उसके कारण कुछ आपका हलचल होता है, जिसके कारण आपका अर्थक्वेक आता है। ये डाटा हम अर्थक्वेक प्रोन एरियाज देख रहे थे। जो आपका 12% जो आपका एरियाज है वो आपका सीवियर है। इसमें से आपका 18% सीवियर अर्थक्वेक एंड 25 आपका डैमेजेबल अर्थक्वेक। ये फिर आपका आइसोलेशनल और लार्ज अर्थक्वेक एरियाज हैं। तो इसमें आप पूरा देख सकते हैं कि जो हमारा नॉर्थर्न और आपका ईस्टर्न पार्ट जो है, यानी जो भी हमारा माउंटेन रीजन है वहाँ पे हमारा अर्थक्वेक ज्यादा आता है। इसके अलावा कुछ वेस्टर्न पार्ट्स भी है, जिसमें हमने अभी पिछली टेबल में देखा था भुज का हम अर्थक्वेक देख रहे थे। तो ये हमारे अर्थक्वेक एरियाज हैं जहाँ पे हमारा ज्यादातर अर्थक्वेक जो है वो देखने को मिलता है। ये अर्थक्वेक रिस्क जोन है, कहाँ कहाँ पर अर्थक्वेक की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। तो हम भी हाई डैमेज रिस्क जोन में है, वेरी हाई में तो नहीं है लेकिन हाई डैमेज रिस्क जोन में हम है। जो बिल्कुल आपका डार्क रेड कलर देखते हैं वो आपका वेरी हाई डैमेज जोन है। उसके बाद लाइट आपका जो आपका लाइट पिंक है वो आपका
हाई डैमेज जोन है, उसके बाद मॉडरेट डैमेज जोन और आपका लो डैमेज जोन। तो इसके आधार पर हम अपना जो भी हमारे ऑक्यूपेशन होते हैं, जो भी हमारे बिल्डिंग स्ट्रक्चर होता है, हम इस सर्वे के आधार पर उसका टेस्ट करा के इस तरह की हम कंस्ट्रक्शन वगैरह उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं कि हम किस जोन में हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारे जो एक्टिविटीज हैं, जो हमारा कंस्ट्रक्शन है, वो इस तरह से होना है। ये कुछ फिगर्स हैं जो सिर्फ हमें इंडिकेट करती हैं कि किसी भी नेचुरल घटना के बाद, लाइक हमने अर्थक्वेक ही लिया है, तो कितना भयावह दृश्य होता है। हम देख पा रहे हैं किस स्तर पर हमारा जो इकोनॉमिक और आपका सोशल लॉस होता है, और उसके बाद उसको दोबारा से रिस्टेब्लिश करना वाकई एक आपका चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। इसके बाद से हम देख रहे हैं कि कुछ एग्जाम्पल्स हैं अर्थक्वेक कब कब कहाँ कहाँ आया है। तो इसमें भी हम कुछ एग्जाम्पल्स ही देख पा रहे हैं। ये भी अर्थक्वेक या आफ्टर अर्थक्वेक की कुछ आपकी इमेजेस हैं। ये वही जो पहले हम देख रहे थे मैप, वेरी हाई डैमेज रिस्क जोन, हाई डैमेज रिस्क जोन, मॉडरेट, लो और वेरी लो। भारत के रेफरेंस में हम देखते हैं तो भारत में कहाँ कहाँ किस कैटेगरी के आपका डैमेज हो सकता है, या कौन कौन से एरिया किस कितने रिस्क जोन में है, उसी को दर्शाता हुआ ये एक मैप है। ये भी सेम वही है, सीजनल एक्टिविटीज आपकी जो भी है कि 95% सॉरी 59% जो है आपका प्रोन एरियाज है जो अर्थक्वेक से प्रभावित है। इसके बाद अर्थक्वेक जो आपका 4 अर्थक्वेक्स अबव, इसमें से आपका 8 और 7.5 रेक्टर स्केल पे लास्ट 100 ईयर्स में आए हैं, और 7 इन द लास्ट 2 डिकेड्स में। डेंस पॉपुलेशन एंड ओल्ड कंस्ट्रक्शन एड टू द प्रॉब्लम। इसमें जो हमारे डेंसिटी या पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग जो डेंस क्षेत्र है, जहाँ जनसंख्या घनत्व बहुत ज्यादा है और जहाँ पर पुरानी ऐसी कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स हैं, वो ज्यादा प्रॉब्लमेटिक एरियाज हैं। इसके बाद साइक्लोन है। तो साइक्लोन का जैसे हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि साइक्लोन जो है ये कोस्टल रीजन में एक आम आने वाली एक आपकी प्राकृतिक आपदा ही है, जो आपके उस कोस्टल रीजन को वृहत स्तर पर प्रभावित करती है, और इससे भी आपकी अपार की जो है वो हानि होती है। और ये भी ज्यादातर आप देखते हैं तो समर सीजन में हमको नॉर्मली इस तरह के साइक्लोन देखने को मिलते हैं। इसके बाद फ्लड्स हैं। तो फ्लड में भी हम देखते हैं फ्लड द मोस्ट कॉमन फॉर ऑल नेचुरल हैजार्ड्स में फ्लड भी आपका कॉमन एक आपकी फ्लड है जो हमारा रेनी सीजन में आमतौर पे देखने को मिलती है। और इससे ज्यादातर जो प्रभावित क्षेत्र है वो हम देख पा रहे हैं कि जितने भी आपका रिवर बेसिन है उनमें ज्यादातर आपकी फ्लड्स आती है, जिसमें आपका जो प्लेन एरियाज हैं, जिसमें आपका उत्तर प्रदेश, बिहार, आसाम, वेस्ट बंगाल हो सकते हैं, ये अधिकतर आपके फ्लड प्रभावित क्षेत्र हैं। साउथ में भी आपका फ्लड है, जिसमें आपकी जो साउथ में साउथ की जो रिवर्स हैं, जिसमें आपका उड़ीसा, ब्रह्मपुत्र, और इसमें आपका आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, जहाँ पर आपका कृष्णा, गोदावरी और कावेरी ये नदियां हैं जो सीजनली आपकी फ्लड को इनवाइट करती हैं, इनमें फ्लड आता है। इसके बाद फिर आपका कंसिक्वेंस ऑफ फ्लड है। इसके कुछ फ्लड के कुछ आपके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी होते हैं, कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी होते हैं। तो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स में हम यही देखते हैं कि जो हमारी सॉइल्स होती है वो फर्दर आपकी न्यूट्रिएंट्स हो जाती है ड्यूरिंग फ्लड्स। तो एग्रीकल्चर के हिसाब से थोड़ा सा हमें ये मिनरल से रिच हो जाती है। आपकी अर्थ जिस एरिया में आपका फ्लड्स आती है तो उस एरिया की जो आपकी सॉइल्स है वो मिनरल से रिच हो जाती है, जिसका आपको फायदा एग्रीकल्चर के पर्पज से मिलता है। इससे एक फायदा और भी है कि जो आपकी बायोडाइवर्सिटी है वो भी आपकी थोड़ा सा रिच हो जाती है फ्लड आने से। अंडरग्राउंड वाटर भी हमारा जो है थोड़ा सा फ्लड के बाद रिच हो जाता है, यानी अप हो जाता है, ऊपर हो जाता है। लेकिन इसके अलावा इसके कुछ आपके नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं, जिसमें हम देखते हैं कि इसमें जो हमारे शिफ्टिंग बहुत ज़्यादा होती है, जो जहाँ पर भी आपकी इस तरह की फ्लड्स की एक्टिविटीज होती हैं वहाँ से लोगों को शिफ्टिंग करना पड़ता है, और उनकी जो करंट क्रॉप्स होती है और जो उनके करंट रेजिडेंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर आपका प्रभावित होता है,
और प्रॉपर्टीज का नाश होता है, जिससे आपका पॉवर्टी जो है वो और ज्यादा बढ़ती है। फ्लड एरियाज में हम देख ही पा रहे हैं, असम, वेस्ट बंगाल, बिहार, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। थोड़ा सा हम फास्ट मोड में इसलिए ताकि लास्ट में जो हमारी एक्टिविटीज है जिसको हम कहते हैं कि जो हमारा स्कूल के लेवल पे हम इसको कैसे मैनेजमेंट कर सकते हैं, तो उस पर थोड़ी सी फिर चर्चा करेंगे। अब ये तो डिजास्टर्स थी, कैसे आते हैं, क्या होता है। इसके बाद डिजास्टर मैनेजमेंट पे हम सीधे आते हैं। तो डिजास्टर मैनेजमेंट जो है एक कंटिन्यूअस एंड इंटीग्रेटेड प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, कोऑर्डिनेटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग मेजर्स विच आर नेसेसरी टू एक्सपीरियंस और यानी डिजास्टर मैनेजमेंट क्यों जरूरी है, तो ये आपका प्रिवेंशन ऑफ डेंजर और थ्रेट फॉर एनी डिजास्टर, रिडक्शन ऑफ रिस्क of any disaster or its severity or consequences, capacity building, preparedness to deal with any disasters, promote response to any threatening disaster situations or disaster, assessing the severity, magnitude or effect of any disaster, फिर आपका इवेक्यूएशन रिसर्च एंड रिलीफ, फिर आपका रिहेबिलिटेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन। तो ये सारे पार्ट जो है डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर हम इंक्लूड करते हैं। आप देख सकते हैं कि इस तरह की जो भयावह स्थिति हमारे पास जितना भी जो डेंस पॉपुलेशन एरियाज हैं उनमें डिजास्टर अगर आती है तो उसके भयावह परिणाम देखने को मिलते हैं। इसके बारे में स्कूल सेफ्टी या रोल ऑफ पॉलिसी मेकर्स का क्या क्या हो सकता है, स्टूडेंट टीचर्स का रोल ड्यूरिंग डिजास्टर या डिजास्टर मैनेजमेंट में क्या हो सकता है, रोल ऑफ स्टेक होल्डर्स क्या हो सकता है, HOS, SMC, जो भी स्कूल से रिलेटेड विभिन्न स्टेक होल्डर्स हैं उनका क्या रोल हो सकता है डिजास्टर मैनेजमेंट। रिसेंटली हम देखते हैं कि जो हमारा कोविड-19 एज ए डिजास्टर है, जिसको हमने एक बायोलॉजिकल डिजास्टर के रूप में आइडेंटिफाई किया और एक पैनिक सिचुएशन से, तो ये हमारे पास रियल एग्जांपल है कि डिजास्टर्स में हम किस प्रकार रिएक्ट कर सकते हैं, उससे किस प्रकार हम बच सकते हैं। तो अभी आप देखते हैं कि ड्यूरिंग कोविड-19 आपका जो भी एजुकेशनल सोशल सिस्टम जो है वो टोटली आपका चेंज हुआ है, और इससे बचने के प्रोफेशन जो भी आपके प्रिकॉशंस हैं वो हमें टाइम टू टाइम सरकार के द्वारा भी और इंडिविजुअल भी हमें बताए गए हैं कि इनसे हम कैसे बच सकते हैं। इसके बाद है आपका डेवलपमेंट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। तो हम जब बात करते हैं तो हमने डिजास्टर डेवलपमेंट मैनेजमेंट एक्ट भी एक बनाया हुआ है, और कौन कौन सी ऐसी हमारी एजेंसीज और अथॉरिटीज हैं जो डिजास्टर मैनेजमेंट में हमें हेल्प करती हैं। तो हाई पावर्ड कमेटी सेटअप इन आपका अगस्त 1999, फिर आपका अंटिल 2001 आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एग्रीकल्चर मिनिस्टर, ट्रांसफर्ड ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इन जून 2002, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एस्टेब्लिश्ड आपका सितंबर 2005, इसी को डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी या डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट भी कहा गया है। फिर आपका इंक्लूजन ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट इन 7th स्कीम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड वही आपका सितंबर या दिसंबर 2005 डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। तो ये डिजास्टर मैनेजमेंट के एक्ट के तहत जो है आप 3 स्तर पे ये आपका कार्य करता है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, एक आपका सेंट्रल लेवल पे, एक स्टेट लेवल पे और एक आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो सेंट्रल लेवल पे जो आपका नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होती है तो वो सेंट्रल लेवल पे कार्य करती है, और इसके चेयरपर्सन जो होते हैं वो आपका प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं। इसका काम यही होता है, ये एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करती है ऑल ओवर द कंट्री, और जो भी आपके डिजास्टर इफेक्टिव एरियाज हैं उनके लिए ग्रांट जो है वो यहीं से आपका रिलीज होती है और नीचे तक फिर वो पहुंचती है। तो ऊपर से जो भी आपकी प्लानिंग और जो भी सहायता आपको प्रोवाइड की जाती है तो वो नेशनल लेवल पर होता है। इसका हम फॉर्मेशन देख सकते हैं, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट स्ट्रक्चर जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, इसको नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी कहा गया है। यह नेशनल इसमें आपका कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटीज होती हैं और प्लानिंग कमीशन होता है। MHA होता है, मिनिस्ट्री ऑफ
इसके बाद अदर मिनिस्टर ऑफ डिपार्टमेंट्स, कैबिनेट्स, हाई लेवल, ये सब जो भी हमने प्रीवियस स्लाइड्स में डिस्कस किए हैं, ये सारी आपका नेशनल लेवल पे होती है। नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी होती है और आपका ARMED फोर्सेज होती हैं जो ड्यूरिंग डिजास्टर्स हमें मदद करती हैं ग्राउंड लेवल। इसके बाद आपकी स्टेट यूटीज या जो गवर्नमेंट्स है उनका रोल होता है, जिसका आपका स्टेट लेवल पे आपकी जो ये बचाव कार्य होते हैं, तो वहाँ पर हमारी बहुत सारी ऐसी कमेटीज होती हैं जिसमें आपका स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज होती है, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट आपका रेफरेंस फोर्स होती है, डिपार्टमेंट ऑफ होम होता है, मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स होते हैं, होम गार्ड, सिविल डिफेंस, फिर आपका पुलिस और फायर सर्विस स्टेशन से स्टेट लेवल पे कार्य करती है। और इसपे जो सबसे इम्पोर्टेंस होती है, जो ग्राउंड लेवल पे सीधे जो आपके हमारे लोकल बॉडीज या इफेक्टिव जो हमारे पर्सन्स होते हैं या पीपल्स होते हैं, कम्युनिटी होती है, उनसे सीधे जो डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जो आपकी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी होती है, उसका काम होता है कि वो सर्वे करके ये आइडेंटिफाई करती है कि किस एरिया में किस लेवल पे आपका डैमेज हुआ है और किन किन लोगों को उसके तहत राहत प्रदान की जाए। ये काम होता है जिला स्तर पर जो आपका डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी होती है, ये देख रेख में होता है जो जिला मजिस्ट्रेट होते हैं उनके अंदर। ये उसी को इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क दिखाया गया है, डिजास्टर मैनेजमेंट स्ट्रक्चर, सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल और आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल, इसी के 3 स्तर आपके होते हैं। इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे, तो ये हमने मोटा मोटा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट और इसके टाइप्स और उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश की। अब हम जो मेन फोकस जो हम करेंगे वो करेंगे जो हम स्कूल डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी, जिससे हम और आप डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, और हर स्कूल अपने एक डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी अपने यहाँ फ्रेम करता है, जिसका काम डिजास्टर स्कूल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान फोकस करना होता है। तो उसके लिए मैंने एक सेकंड स्लाइड्स आपके साथ शेयर की है। ये है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्कूल डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी, क्योंकि आप सीधे स्कूल से जुड़े होते हैं और स्कूल्स में जब कोई डिजास्टर आती है तो हमारी क्या प्रायोरिटीज होती हैं, और उसके लिए हम हर स्कूल्स में एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऐसा कंस्टिट्यूट करते हैं इस कमेटी को, जिसको कहा गया है स्कूल डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी। इसी कमेटी का जो मेन काम होता है ये होता है कि ये अपने स्कूल का स्कूल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान तैयार करे। तो इस कमेटी में कौन कौन मेंबर्स होते हैं, इसमें आप चेयरपर्सन के तौर पे प्रिंसिपल हो सकते हैं, वाइस प्रिंसिपल एज ए कमांडर हो सकते हैं, सेफ्टी ऑफिसर्स होते हैं जो आपके स्पोर्ट्स टीचर्स हो सकते हैं, स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर्स हो सकते हैं, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ नियरेस्ट आपके फायर स्टेशन हो सकते हैं। ये वो मेंबर्स हो सकते हैं जो आपकी स्कूल डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी में हो सकते हैं। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ नियरेस्ट पुलिस स्टेशन हो सकते हैं, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ नियर आपका हेल्थ सेंटर जो भी आपके आसपास है उसका रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है। जो आपके पेरेंट्स टीचर्स हैं, ये आप पेरेंट्स ऑफ टीचर्स एसोसिएशन है उसके आपके प्रेसिडेंट्स हो सकते हैं। साइंस एंड सोशल साइंस टीचर्स आपकी स्कूल डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी में एज ए मेंबर हो सकते हैं। इसमें जो आप सब कमेटीज ऑर्गेनाइज करते हैं उनके हेड्स भी इसमें हो सकते हैं, जैसे हेड ऑफ अवेयरनेस एंड जनरेशन ऑफ कम्युनिकेशन टीम्स के हेड्स को आप अपनी डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी में रख सकते हैं। हेड ऑफ फर्स्ट एड टीम के जो भी आपके हेड हैं उनको आप रख सकते हैं। ये सब कमेटीज हैं जो हम डिजास्टर के मैनेजमेंट के लिए आप पहले से ही गठित करते हैं। इसमें फिर आपके हेड ऑफ सर्च एंड रेस्क्यू टीम के हेड हो सकते हैं, इक्वेशन जो आपकी इक्वेशन टीम है उसके हेड हो सकते हैं, हेड ऑफ साइट सिक्योरिटी टीम्स हो सकती हैं, हेड ऑफ ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट के हेड हो सकते हैं, और आपकी जो फायर सेफ्टी टीम है उसके भी हेड्स जो है आपकी स्कूल डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी में हो सकते हैं। आप देखते हैं कि जो आपका हम कंस्टिट्यूट करते हैं स्कूल डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी में, तो उसमें जो सब कमेटीज अभी हमने ऊपर डिस्कस की थी जिनके हेड्स को हमने एज ए अपना कमेटी में एज ए मेंबर स्थान दिया था, तो उन्हीं को दोबारा ये रिपीट किया गया है कि अवेयरनेस एंड जनरेशन ऑफ कम्युनिकेशन टीम्स होती है,
एक आपका फर्स्ट एड टीम्स हो सकती है, सर्च एंड रेस्क्यू टीम हो सकती है, इवैक्यूएशन टीम हो सकती है, चाइल्ड सिक्योरिटी टीम हो सकती है, ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट टीम हो सकती है और आपका फायर सेफ्टी टीम हो सकती है। स्कूल डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी के क्या एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो उनको एक बार देख लेते हैं। टू कैलकुलेट ऑल द इंफॉर्मेशन नीडेड फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ डिजास्टर्स इन स्कूल। तो स्कूल में जितनी भी आपके डिजास्टर्स हैं या डिजास्टर से इफेक्टिव एरियाज हैं, उनकी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना या उनसे जो आवश्यक सूचनाएं हैं उनको कलेक्ट करना, ये भी हमारा एक ऑब्जेक्टिव है स्कूल डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी का। सेकेंड आपका है टू एस्टेब्लिश एन इमरजेंसी रेस्पॉन्स सिस्टम इन स्कूल। स्कूल में एक ऐसा आपातकालीन आपका सिस्टम जो है वो स्थापित करना जिससे कि सभी को कम्युनिकेट हो सके। टू प्रिपेयर द स्कूल कमेटी फॉर एनी इमरजेंसी रेस्पॉन्स के लिए स्कूल कमेटी को जो है वो तैयार करना। टू डिफाइन रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इफेक्टिव रेस्पॉन्सिव। इसमें फिर या हम कह सकते हैं कि जो भी आपकी सब कमेटीज हैं उनके रोल और उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन करना स्कूल डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी का रोल हो सकता है या एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है उसका। टू क्रिएट अवेयरनेस एंड बिल्ड द कैपेसिटी ऑफ स्कूल कम्युनिटी। कुछ ऐसे हमें अवेयरनेस एंड उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग, जो भी स्कूल कम्युनिटी है, स्कूल की अथॉरिटीज है, स्टाफ्स हैं और बच्चे हैं, उनके लिए कुछ ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना, ये भी स्कूल डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी का ऑब्जेक्टिव हो सकता है। टू इम्प्लीमेंट मिटिगेशन एक्टिविटीज इन स्कूल। स्कूल में कुछ ऐसी एक्टिविटीज को इम्प्लीमेंट करना जिससे आपका जो ड्यूरिंग डिजास्टर आपका नुकसान जो है वो कम से कम हो सके, वो भी एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है। टू प्रमोट पार्टिसिपेशन अमंग वेरियस स्टेक होल्डर। जो भी आपके विभिन्न स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी प्रमोट करना पार्टिसिपेशन के लिए, ये भी एक आपका एम्स एंड ऑब्जेक्टिव स्कूल डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी का। अब स्कूल डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी के काम क्या होते हैं, अगर किसी साथी की कोई शेयरिंग हो, क्योंकि हम सभी देखते हैं कि स्कूल में हम सीधे जुड़े हुए हैं स्कूल डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी में, हो सकते हैं आप में से बहुत सारे साथी जो हैं वो एज ए मेंबर वर्क भी कर रहे होंगे। तो इसमें जो आप काम करते हैं स्कूल डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी क्या काम करती है, उनके एक बार थोड़ा सा फोकस करते हैं। तो प्रिपरेशन आप प्रिपेयर करते हैं पहले स्कूल प्रोफाइल। हर स्कूल अपना एक स्कूल प्रोफाइल बनाता है जिसमें आप आइडेंटिफाई करते हैं अपने रिसोर्सेज को, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को। तो इसमें आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं नॉन स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स को। नॉन स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स वो होते हैं जो आपके कंस्ट्रक्शन का पार्ट नहीं होते हैं, लेकिन आप देखते हैं कि जितनी आपकी हमारा जो लगभग आपका ड्यूरिंग अर्थक्वेक या ड्यूरिंग डिजास्टर्स 95% जो आपकी कैजुअलिटीज होती हैं या इंजरीज होती हैं वो इन नॉन स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स के कारण होती हैं। इसमें क्या क्या हो सकते हैं, जैसे आपका फाइल केबिन्स हो सकती है, सेवलिंग्स हो सकती है, सेल्फ कंटेंट्स हो सकते हैं, कंप्यूटर स्टोरेज कैबिनेट्स हो सकती हैं, वॉल हैंगिंग हो सकती हैं, पर्सन्स हो सकती हैं, रेफ्रिजरेटर्स हो सकते हैं, एसीज हो सकते हैं, प्रोजेक्शंस आपके हो सकते हैं, लाइट हो सकती है, फिक्सेशंस हो सकते हैं, फैन हो सकते हैं। ये वो हैं जो ड्यूरिंग डिजास्टर्स जिनके गिरने से या जिनके मूवमेंट से ज्यादातर आपकी कैजुअलिटीज होती हैं या इंजरीज होती हैं। तो इनका आइडेंटिफिकेशन करना बहुत जरूरी है। स्कूल डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी का मुख्य गोल यही है कि ये अपने स्कूल में जितने भी इस तरह के एलिमेंट्स हैं या असेसमेंट्स हैं उनको हम जरूर आइडेंटिफाई करें। दूसरा होता है आइडेंटिफिकेशन स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स। स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स में आपका बिल्डिंग और बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन मटेरियल या बिल्डिंग की बनावट आ सकती है, जिसमें आप देखते हैं कि आपके कॉलम्स आ सकते हैं, जो आपके सेस्मिक जॉइंट्स हैं वो आ सकते हैं, शॉर्ट कॉलम्स आ सकते हैं, एक्सटेंशन जॉइंट्स आ सकते हैं, लॉर्ड ओपनिंग्स आ सकती हैं, डायमेंशन ऑफ बीम्स आ सकते हैं, या आपकी बिल्डिंग्स के कोई क्रैक्स वगैरह आ सकते हैं, शॉर्ट कॉलम स्टब्स आ सकते हैं, आपकी रूफ आ सकती है। ये सारे जो है ये आपके स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स हैं जो सीधे बिल्डिंग से जुड़े हुए हैं, जो आपका समय समय पर इनको जो है हमें ऑब्जर्व या इनका एक तरह से निरीक्षण बहुत जरूरी है।
इसके बाद आपके स्कूल के कैंपस के आसपास या उसके बाहर जो भी आपके ऐसे आइडेंटिफिकेबल हैजार्ड्स हैं, उनका आइडेंटिफिकेशन करना भी बहुत जरूरी है। आपके स्कूल कैंपस के विद इन 4-5 किलोमीटर्स के दौरान कोई ऐसी एक्टिविटीज तो नहीं हो रही है जो आपकी हैजार्ड्स को आपको इनवाइट कर सकती है, उसको आमंत्रित कर सकती है। तो इसमें कोई भी आप केमिकल फैक्ट्रीज हो सकती है, स्कूल के आसपास हाई टेंशन लाइन हो सकती है, पेट्रोल पंप हो सकता है, प्रोसेसिंग यूनिट हो सकती है, कोई पुरानी ऐसी ओल्ड बिल्डिंग हो सकती है, लाइनिंग इलेक्ट्रिकल पोल्स हो सकते हैं, ये आपके जो इलेक्ट्रिकल आपके ट्रांसफार्मर्स हो सकते हैं स्कूल के आसपास। कई स्कूलों के हमने देखा गेट पे ही बिल्कुल आपके ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, तो वो भी आपके आपदा को आमंत्रित कर सकते हैं। एग्रो प्रोडक्ट्स या प्लांट्स हो सकते हैं, ऑयल पाइपलाइंस हो सकती है, आसपास कोई हाईवे ऐसा गोदाम हो सकता है, कुछ ऐसे और आपके सब्सटेंस हो सकते हैं, गैस पाइपलाइन हो सकती है जो आपके स्कूल के आसपास हो सकते हैं। तो इनका आइडेंटिफिकेशन भी बहुत जरूरी है। ये तो था स्कूल के कैंपस के बाहर आपके कौन कौन से हैजार्ड्स हो सकती हैं। इनके अलावा आपका इसमें भी करेक्शन होगा, 2 मिनट बाद दोबारा enter करते हैं। दूसरा है आपका आइडेंटिफिकेशन ऑफ आपका वल्नरेबल एरियाज विद इन स्कूल कैंपस। तो आपके ऐसे स्कूल में आपके ऐसे कौन कौन से एरियाज हैं जो आपका आपदा को आमंत्रित कर सकते हैं। तो जो हमारे जिनको हम रिसोर्स रूम भी कह सकते हैं, आपकी केमिस्ट्री लैब हो सकती है। हम देखते हैं कि केमिस्ट्री में हमारे बहुत सारे ऐसे केमिकल्स होते हैं, उनकी पहचान भी बहुत जरूरी है। ड्यूरिंग डिजास्टर्स उनसे भी आपकी जो है आपदा जो है वो आपकी वृहद स्तर पर हो सकती है। फिजिकल लैब्स आपकी हो सकती हैं, बायोलॉजिकल लैब्स हैं, नैरो केस हैं आपके, सस्पेंडेड आपकी सीलिंग्स हैं, ओपन इलेक्ट्रिकल वायर्स हैं, आपका किचन एरियाज है, कॉरिडोर्स हैं, और आपका इंफ्रारेड आपकी लाइटिंग है, और आपका एलिवेटर्स है। तो ये इनका आइडेंटिफिकेशन भी बहुत जरूरी है स्कूल में। इसके बाद है आपका डाटाबेस ऑफ द फास्ट डिजास्टर एक्सीडेंट्स विच आर अफेक्टेड इन द स्कूल। ये भी आपका स्कूल डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी के तहत ही आपको एक डाटाबेस तैयार करना होता है कि पिछली जो भी हमारी घटनाएं घटी उनसे हमें कितना नुकसान हुआ, ताकि आगे हम उसको देख के सीख ले सकें और आगे आपका उसकी प्रॉपर हम प्लानिंग कर सकें। तो इसका हमें अर्थक्वेक लास्ट ईयर आया था, तो हमारी ये कमियां रह गई थी, इतना हमें जो है हानि हुई थी, उसका पूरा एक डाटाबेस हमें हर जो भी हमारी डिजास्टर या कोई भी ऐसी आपदा स्कूल में घटित होती है तो उसका हमें एक डाटाबेस तैयार करना होता है, ताकि हम आगे की अपनी प्लानिंग को एग्जीक्यूट कर सकें और जो भी नुकसान पिछली बार हुआ था उसको हम कर तो सकें। इसका ये एक ऑब्जेक्टिव होता है, जो भी हम पिछली घटनाओं का डाटाबेस तैयार करें। इसके बाद आपका रिसोर्स इन्वेंट्रीज होती हैं, जो हमने अभी पिछली बार पिछली स्लाइड्स में डिस्कस किया था, जिसमें आपकी जो भी आपकी प्रैक्टिकल लैब्स हो सकती हैं। तो लिस्ट ऑफ आपका रिसर्च अवेलेबल इन द स्कूल कैंपस के स्कूल कैंपस में आपके कौन कौन से ऐसे आपके रिसर्च इन्वेंट्रीज हैं जो आपको ड्यूरिंग डिजास्टर हेल्प कर सकती हैं। तो फर्स्ट एड बॉक्स आपके हो सकते हैं, फायर एग्जिबिटर्स हो सकते हैं, टॉर्च हो सकती है, पिंक रोप हो सकती है, सैंड बकेट्स हो सकती हैं, कंप्यूटर लैब, फिजिक्स लैब, केमिस्ट्री लैब, आपकी बायोलॉजी लैब, आपका कैंटीन, ड्रिंकिंग वाटर कैपेसिटी, टॉयलेट, स्कूल प्लेग्राउंड, आपका लाइब्रेरी, रूम्स इन स्कूल्स, ये सब क्या है आपके रिसोर्स हैं जो अवेलेबल हैं आपके स्कूल्स में ही, जिनको आपका आइडेंटिफिकेशन होना बहुत जरूरी है। इसके बाद फिर आपका लिस्ट ऑफ रिसोर्स अवेलेबल आउटसाइड स्कूल कैंपस। अभी तो हम देख रहे थे कि ऐसे कौन कौन से आपके एरियाज हैं स्कूल के आउटसाइड जो किसी आपदा को आपको घटना को घटित कर सकती हैं, या किसी घटना के समय उनसे हमें और प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। यानी आपकी घटना जो है, जो डिजास्टर्स है, वो लार्ज स्केल पे फैल सकती है। अब हम देखते हैं कि स्कूल के आसपास ऐसे कुछ हमारे रिसोर्सेज भी हैं जो ड्यूरिंग डिजास्टर हमें मददगार भी हो सकते हैं, जैसे हॉस्पिटल्स हैं। तो वो भी आपको इंडिकेट होना चाहिए जब आप स्कूल का मैप बनाते हैं, तो कितने एरिया पे, कितने स्कूल से कितने डिस्टेंस पे आपका हॉस्पिटल है, पुलिस स्टेशन है, फायर स्टेशन है, ब्लड बैंक है, फार्मेसी है, एनजीओज हैं, सिविल डिफेंस है, रीजनल शॉप्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, रिलीजियस प्लेस हैं,
तो इनकी हमें जरूरत पड़ती है, क्योंकि इनसे हमें ड्यूरिंग डिजास्टर्स आपकी कम्युनिटी में या आपके स्कूल्स में मदद कितनी जल्दी पहुंच सकती है, हॉस्पिटल से आपको कितनी जल्दी आपको सहायता मिल सकती है, पुलिस स्टेशन से आपको कितनी जल्दी सहायता मिल सकती है, फायर की स्थिति है तो फायर स्टेशन से आपको कितनी जल्दी सहायता मिल सकती है, ये सब आपको इनकी लिस्ट और इनको मैप में लोकेट करके रखना होता है, ताकि हम इनका यूज कर सकें रिसोर्सेज का ड्यूरिंग डिजास्टर। इसके बाद और क्या काम होता है स्कूल डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी का, तो उसमें प्रिपरेशन ऑफ स्कूल मैप्स होता है। आप सभी स्कूल मैप बनाते हैं, इनको भी हम 3 कैटेगरी में रखते हैं। एक आपका फिजिकल मैप होता है, एक रिसोर्स मैप होता है, एक इक्वेशन मैप होता है। तो फिजिकल मैप में हम क्या क्या इंडिकेट करते हैं, नंबर ऑफ क्लासरूम्स। ये मैप्स जो है हम इसीलिए तैयार करते हैं प्रिपरेशन स्कूल मैप, ताकि ड्यूरिंग डिजास्टर्स हमें जो मदद पहुंचानी है उसमें दिक्कत ना हो, एग्जिट हम आराम से कर सकें या एंटर हम आराम से कर सकें, आइडेंटिफाई हम चीजों को अच्छे से कर सकें कि कहाँ पर कौन कौन सी जो है आपकी लोकेशंस है, तो लोकेशंस आपकी इजीली आइडेंटिफाई हो जाती है अगर आप प्रॉपर मैप बना लेते हैं स्कूल्स का तीनों स्तर पे। तो फिजिकल मैप जब हम बनाते हैं तो उसमें हम किन किन चीजों को इंक्लूड करते हैं, इसमें नंबर ऑफ क्लासरूम्स हो सकते हैं, नंबर ऑफ आपके स्टाफ रूम्स हो सकते हैं, प्रिंसिपल एंड वाइस प्रिंसिपल रूम्स हो सकते हैं, टॉयलेट एंड रूम्स हो सकते हैं, वेरियस लैब सच एज फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड कंप्यूटर्स हो सकती हैं, प्लेग्राउंड एंड ओपन एरियाज हो सकते हैं। इसके बाद आपका स्कूल रिसोर्स मैप भी हो सकता है, जिसमें आपके पास जो रिसोर्स मटेरियल है उसको आप दर्शाते हुए मैप बनाते हैं। इसमें आपका मटेरियल रिसोर्स सच एज आपका फायर एक्सटिंग्विशर्स हो सकते हैं, रोप्स, फर्स्ट एड बॉक्स, जो भी आपके स्कूल में अवेलेबल है वो कहाँ है उनको दर्शाता हुआ मैप हो सकता है। नियरेस्ट अवेलेबिलिटी रिसोर्स हो सकते हैं, जिसमें आपका फायर स्टेशन, हॉस्पिटल्स, जो पहले चर्चा करते हैं, नियरेस्ट आपका बस स्टॉप, रेलवे स्टेशन एंड ऑटो स्टैंड हो सकते हैं। ज्योग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज आपका लेक्स, रिवर्स या हाई और लोअर ग्राउंड्स हो सकते हैं, बीच एटसेट्रा। जो भी आपके स्कूल के नियरेस्ट लोकेटेड स्थान है उनको हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। और लास्ट और थर्ड जो आपके इसमें इम्पोर्टेंस होता है वो स्कूल एक्वेशन मैप्स होता है। इसमें आपका जो मैप में प्रॉपर आपकी स्टेयर्स, डोर्स और विंडोज को हम इंडिकेट करते हैं, ताकि हमें आने जाने के रास्तों को हम आइडेंटिफाई कर सकें। इसमें आपका एग्जिट सेल भी क्लियरली आपका डिमार्केट होता है मैप में कि आपको किधर से निकलना है, किधर से आपको एंट्री करना है। वेरियस आपके एग्जिट रूट्स फॉर द क्लासरूम के और स्टाफ रूम्स के सब इसमें आपके क्लियर्स होते हैं। और इसमें एक इंडिकेशन ये भी होता है जो आपकी लोकेशन को बताता है कि अब आप कहाँ हैं और आप किधर मूव कर सकते हैं। तो ये स्कूल से रिलेटेड जो 3 मैप थे इनको हम स्कूल डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी के तहत प्रिपेयर करते हैं। इनके अलावा और जो कार्य हो सकते हैं वो आपका एनुअल कैलेंडर हो सकता है फॉर कंडक्टिंग वेरियस प्रिपेयर्डनेस एक्टिविटीज इन स्कूल्स। इन डिजास्टर्स के लिए या डिजास्टर को आप उनके नुकसान को कम करने के लिए समय समय पर पोस्टर मेकिंग कंपटीशन करा सकते हैं, डिबेट्स, क्विज, रैली, गेस्ट लेक्चर, डेमोन्स्ट्रेशन या एक्शन प्लान फॉर कंडक्टिंग मॉक ड्रिल्स करा सकते हैं। जो भी आपके अर्थक्वेक्स हैं उनको अर्थक्वेक, फायर, फ्लड, सुनामी, साइक्लोन या इंडस्ट्रियल जो भी एक्सीडेंट्स हैं उन पे आप मॉक ड्रिल करा सकते हैं। कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम करा सकते हैं। फर्स्ट एड ट्रेनिंग, सर्च एंड रेस्क्यू ट्रेनिंग से आप ऐसा एक प्रोग्राम करा सकते हैं। बेसिक डिजास्टर मैनेजमेंट ट्रेनिंग आप करा सकते हैं। टीचर्स को उनका कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए आप टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम करा सकते हैं। इक्वेशन ट्रेनिंग्स करा सकते हैं। बेसिक सीपीआर की ट्रेनिंग आप करा सकते हैं स्कूल्स में समय समय पर, और फायर सेफ्टी ट्रेनिंग भी आप करा सकते हैं स्कूल में समय समय। अब ये जो हम देखते हैं कि दिल्ली में हम दो जो समस्याएं हैं उनको आमतौर पर फेस करते हैं, एक आपकी अर्थक्वेक की है और एक हमारी फायर वाली है। तो ड्यूरिंग अर्थक्वेक हमें क्या करना चाहिए, ड्यूरिंग आपका फायर हमें क्या करना चाहिए। तो ड्यूरिंग अर्थक्वेक हम देखते हैं कि आपका at least at the first indicator for the ground shaking, all the teams must be activated and warning signal must be issued in the school. तो आपका फर्स्ट इंडिकेशन यही होना चाहिए कि आपका ग्राउंड शेकिंग होना चाहिए और सभी को आपको जो है
यानी जैसे ही आपको अर्थक्वेक पे कोई आभास होता है तो आप कोशिश करें कि आप ग्राउंड पे आने की कोशिश करें, बिल्डिंग को खाली करने की कोशिश करें, और एक आपका वार्निंग जो आपका अलार्म होता है उसको आप उसके थ्रू सूचना दे सकते हैं। अगर आपके कहीं स्टाफ या आपके स्कूल्स के बच्चे कहीं फंसे हुए हैं तो उनको बाहर आने के लिए। इसके बाद पीपल इन क्लासरूम परफॉर्म, अगर बाहर नहीं आ पाते हैं और आप क्लासरूम में फंस जाते हैं तो उसके लिए आपका ड्रॉप, कवर एंड होल्ड वाली आप एक्टिविटीज हम ड्यूरिंग जब मॉक ड्रिल्स कराते हैं इस तरह के अर्थक्वेक की, तो हम बताते हैं कि आप अगर फंस गए हैं तो घबराएं नहीं, नीचे बैठ जाएं, अपने को कवर करें और अपने सिर को होल्ड कर लें। ऐसी एक्टिविटीज हम करते हैं और कराते हैं। After checking that stopped, all the classroom must be evacuated and students staff will be moved to the area designation of the equation map। अब जो भी आपका equation map में आपका साइंड आपको इंडिकेट किए गए हैं उनके अकॉर्डिंग सभी बच्चे और स्टाफ जो हैं बाहर आएंगे। इसकी व्यवस्था हम ड्यूरिंग अर्थक्वेक कर सकते हैं। स्पेशल अरेंजमेंट फॉर द डिसेबल्ड पीपल्स के लिए हम कर सकते हैं, जो हमारे डिसेबल्ड या CWSN चाइल्ड्स हैं उनके लिए स्पेशल अरेंजमेंट कर सकते हैं। ऑन स्टेयर्स, स्टेयरकेस में हम एवरीबॉडी शुड बी डिसिप्लिन एंड मस्ट कम आउटसाइड कमेंट कर। कई बार हम देखते हैं कि ज्यादातर जो हमारी प्रॉब्लम्स होती है वो उस डिजास्टर की वजह से नहीं होती है, लेकिन ड्यूरिंग डिजास्टर जो हम टेंस हो जाते हैं और उस टेंस में जो भगदड़ मचती है उससे ज्यादा हम इंजरीज कर बैठते हैं। तो उस समय हमें बहुत ही पीसफुल और काम होने की जरूरत है, डिसिप्लिन रहने की जरूरत है, ताकि हम एक सिस्टमेटिक वे से बाहर निकल सकें। तो स्टेयर्स पे हमें या टीचर्स को खड़े हो जाना चाहिए जब बच्चे और हमारे स्टाफ बाहर आ रहा है। तो इस तरह का हम करके जो भी हमारी इंजरीज है, जो भी नुकसान है उसको कम कर सकते हैं। और लास्ट में जहां हम इकट्ठित हुए हैं सबको काउंटेड करना बहुत जरूरी है। अगर आप में से कोई समवन मिसिंग है तो उसकी सूचना रेस्क्यू टीम को जरूर दें, ताकि उसको समय रहते राहत आपको पहुंच सके और उसको बचाया जा सके। ये कुछ आपकी एक्टिविटीज थी जो हम ड्यूरिंग अर्थक्वेक करते हैं। ऐसे ही कुछ एक्टिविटीज जो है वो हम ड्यूरिंग फायर भी करते हैं। तो कुछ तो हमारी कॉमन है जिसमें हम इमीडिएट आपका जो है फायर डिस्कवर करने के लिए अलार्म का यूज करते हैं और कोशिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी उस इफेक्टिव एरियाज को हम खाली कर दें और बाहर आ जाए। फिर आपकी जो लोकल फायर इमरजेंसी सर्विस अथॉरिटीज हैं उनको इन्फॉर्म करते हैं। हेयरिंग अलार्म सभी को हम क्लासरूम्स में ऑर्डिनरी मैनर्स में दे देते हैं। इफ एनीबॉडी, अगर किसी को किसी स्टेशन में आग की पकड़ लेती है तो उसके लिए हम उसको उस स्थिति में भागे नहीं, क्योंकि भागने से आपकी जो है आग ज्यादा फैलती है। तो उसके लिए हम स्टॉप, ड्रॉप एंड रोल वाली एक्टिविटीज थ्रू जब हम मॉक ड्रिल्स कराते हैं फायर्स का, तो ये स्टोरी हम कराती हैं तो उसको तुरंत रुकने को कहें, नीचे उसको बिल्कुल लेट जाए, ड्रॉप हो जाए और अपने को जब तक आग नहीं हो जाए रोल करें, ताकि उसके जो कपड़ों में आग लगी हुई है उसको हम उसे बचा सकें। स्पेशल अरेंजमेंट वही आपका जो हम देख रहे थे कि जो आपके CWSN या डिसेबल्ड चाइल्ड हैं उनके लिए हम स्पेशल अरेंजमेंट्स कर सकते हैं। स्टेयर केस में भी वही है कि वहाँ पे हम काम एंड कूल रहें और बच्चों को आसानी से निकालें, ताकि बच्चों को ड्यूरिंग एग्जिट ज्यादा दुर्घटना ना हो। और फिर जहां भी हम इकट्ठे होते हैं वहां पे एक बार उनको काउंट जरूर करें। अगर कोई मिसिंग है तो उसकी सूचना फिर रेस्क्यू टीम को जरूर। इसके लिए जो मेन काम होता है वो ये होता है कि हम समय समय पर अपने जो स्कूल स्टाफ है, जो स्कूल के बच्चे हैं, उनको समय समय पर इस तरह की जो ट्रेनिंग प्रोग्राम जरूर दिया जाए, क्योंकि हमारे पास इक्विपमेंट्स होते हैं, हमारे पास फायर सिलेंडर्स भी होते हैं और बकेट्स भी होती हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि हम उनको यूज ही नहीं कर पाते हैं इस सिचुएशंस में, और जब यूज करते हैं तो वो वर्किंग नहीं हो पाता है। उस टाइम आपका वर्किंग नहीं है तो उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग सभी को होनी बहुत बहुत जरूर होती है। कोई साथी की किसी की कोई शेयरिंग हो, बहुत जल्दी जल्दी हमने ये डिस्कस किए हैं पॉइंट्स। कोई साथी स्कूल से रिलेटेड किसी समस्या को, क्योंकि हम जो रियल सिचुएशंस में इन डिजास्टर्स को फेस करते हैं वो स्कूल्स में ही करते हैं। कई बार छोटी छोटी घटनाएं जो होती हैं वो डिजास्टर्स का रूप ले लेती हैं, या डिजास्टर का रूप नहीं भी लेती हैं तो उसमें हमें इंजरीज हो जाती है। कई बार कॉमन प्रॉब्लम आती है कि हम देखते हैं लेकिन हमारे डबल शिफ्टिंग, अब तो खैर स्कूल्स में बच्चे नहीं आ रहे हैं, लेकिन जब बच्चे आते हैं तो
जैसे ही आपका मॉर्निंग शिफ्ट की छुट्टी होती है तो जो आपका इवनिंग शिफ्ट होते हैं उनकी क्लास अपना लगनी शुरू होती है, तो उस समय बहुत हड़बड़ होती है। छोटे जो बच्चे हैं आपका 6th 7th क्लास के या उससे भी और प्राइमरी स्तर पर हम देखते हैं तो कई बार बच्चों को धक्का मुक्की में बच्चे गिर जाते हैं और उनको छोटी छोटी चोटें लग जाती हैं, तो उनको हम वहीं ग्राउंड लेवल पे ही सॉर्ट आउट कर सकते हैं। और हम देखते भी हैं कि ज्यादातर छुट्टी के टाइम पे जो हमारा स्कूल स्टाफ होता है उसकी ड्यूटी गेट पे ही होती है, ताकि बच्चों को सेफली आप उनके पेरेंट्स को सौंप सकें और जो नई शिफ्ट 2nd शिफ्ट के बच्चे हैं उनको प्रॉपर आप एंट्री दे सकें। किसी साथी का कोई क्वेश्चन है तो शेयर कीजिए। हेलो, आप सुन भी पा रहे थे सभी साथी या मैं ही बोले जा रहा था? नहीं सर, बिल्कुल सुनाई दे रहा था। इट वाज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ अस। एक्चुअली मैंने बहुत जल्दी इसीलिए किया है क्योंकि मटेरियल बहुत ज्यादा था और जितना आपके साथ इंट्रोड्यूस हो सकता था तो मैंने बहुत जल्दी जल्दी किया है। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है, इस स्थिति में आपको क्या प्रॉब्लम्स आई है तो आप शेयर कर सकते हैं आपके साथ ही, और हम कोशिश करेंगे उसका जवाब देने की। नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपने इतना अच्छे ढंग से समझाया है। सर आई फील किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, जी और जो आपने समझाया है बहुत प्रैक्टिकल तरीके से समझाया, और जितने भी आपने इमरजेंसीज के डिस्कस किए, अर्थक्वेक एंड फायर्स, मुझे लगता है ये काफी हद तक रेलिवेंट है हमारे क्लासरूम सिचुएशंस के लिए भी। मैंने थैंक भी यू वेरी मच सर। इसीलिए चंचल मैम मैंने इसी पे ज्यादा फोकस करने की कोशिश की थी कि जो हमारा स्कूल डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी होती है उसके क्या रोल्स एंड वर्क होते हैं, उनकी क्या भूमिका होती है ड्यूरिंग डिजास्टर। तो कई बार यस ऐसे सर, स्कूल में हम होते हैं और हमें पता ही नहीं होती है कि हम बच्चों को कैसे और हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और हम क्या क्या कर सकते हैं। यस सर, चलिए हाँ बिल्कुल। जी अभी या मुझे लगता है सेशन का मेन मोटिव भी यही था रखने का, कि हम ये जान सके कि हम ड्यूरिंग डिजास्टर्स, वो कोई भी डिजास्टर हो, हम किस तरह से अपने आप को और अपने स्टूडेंट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जी पहले से उनको प्रिपेयर कर सके। तो थैंक यू वेरी मच सर, इट वाज अ डिटेल प्रेजेंटेशन। बहुत अच्छा लगा आपको सुन के, एंड आई रियली थैंकफुल टू यू एंड ऑल द पार्टिसिपेंट्स फॉर ज्वाइनिंग, एंड वाज द सेकंड लास्ट डे ऑफ आवर प्रोग्राम. And with this, we end up with our program. And thank you very much. See you tomorrow at 9:30. Thank you, Sunil sir. Thank you very much. थैंक यू चंचल मैम। Thank you, sir.